वापस ला कितनी बार लाइव है? तीसरा स्ट्रीम क्या है आप भी रात को? हाँ ये मैच देख के बंद करता हूँ, सोने जा रहा हूँ। अरे अच्छा खेलेंगे क्या मालूम, अच्छा गेम देखने मिल जाए ब्रो। कल मैं रॉसी का मैच देखने के लिए पता आंखें खोल के बैठा हुआ था, मेरे को नींद आ रहा था, बहुत पहले से ही नींद आने लग गया था, लेकिन शुरू में तो उसके पहले नींद आ रहा था। मैं सोचा पहले गेम मैच देखूंगा फिर ही सोऊंगा, तो मैं सो नहीं रहा, फिर मेरा मूड ही खराब हो गया, बस मैं सोया नहीं। Welcome back to day 9 of lock-in, and our final opening match of the Omega bracket is about to take place on that stage. It's T1 versus Furia, and of course, judging me on the desk as always, it's the judging Mimi and the judging 𝐒𝐿𝐿. Why do you guys judge me so? Because you do things that make us want to judge you. I just really like shotguns. Okay. That actually, I'm gonna leave. yeah. That was a banger. Okay, are you done? Are you done? I might just bow out. Well, it's actually going to be really rough because for our next team, I kind of think we're going to need your expertise here, 𝐒𝐿𝐿. Well, then I'll stay. Because it's going to be T1, a squad that comes in with a lot of promise. And if you're from, I don't know, maybe a certain hero shooter, you might recognize a couple of names on there. I think we're allowed to like say 𝐒𝐿𝐿, Saya player. I mean, Munchkin as well. There's a lot of names that I feel like I'm wheeling back to time here, but I'm excited for this team 𝐒𝐿𝐿. Yeah, I mean, I think overall this is a fairly stacked roster as far as accolades and history and playing FPS, but it's large question marks around how they're going to be able to perform here on this stage. 𝐒𝐿𝐿, one of the biggest names in Overwatch, now shifting over into this game. Hadn't really been playing it because he was riding bench for the side of the Philadelphia Fusion, getting ready if he needed to step in, and he did. And when he did step in that last season, he did look quite good, but means he wasn't practicing in VALORANT. That's so right. now it's been a very recent pickup for him, and the question is going to be, can he deliver? Can he find his form in this new TAC FPS game? And what's interesting is this is a new direction for T1. Previously, they were competing in North Stream America. कर 4 of the 5 players on this roster are Korean players, Korean speakers, but they were competing in North America. Now the team has picked things up, headed over to the Korean regions, competing in Pacific, so it's something new for them. But what we did see was them play in the offseason at that Ludwig territory, and I'm gonna be honest, it did not look that great. They had some moments here, and I want to start with some of the good, because I think they had some ideas. Their identity was around Saya player on this Neon, going for fast executes with good utility, and you can see that here. You have a stun, you send in your fake you realize they don't have enough space, so want to push deep, a good KO flash. That is all good and well. That's all lovely, including the way that they play out this post-fight. But there was also a lot of rounds where some spaghetti ended up in a place that was not the bowl, and things slipped out of their hands. Yeah, I mean, that's the biggest concern. You look at this roster for the most part, and you say, like, okay, I like all the components. Say, yeah, I don't want to be on Sig9. One of the most puzzling trades that I've ever seen in my life, but he's still here with T1. You've got Saya player, fantastic aimer, and Munchkin as well. But then it's like, okay, we have 𝐒𝐿𝐿, and we're putting him on this very important role in that initiator. Is it going to work? And as we were saying, things did fall apart from time to time. He's got a little bit more time now to go ahead and continue grinding with the team. They haven't been out in Korea. They've actually been in North America, kind of assessing, you know what, we think that this is going to be where we're going to get the best scrims ahead of Pacific, ahead of lock-in. So they remained in North America and have been scrimming there ever since. It's time to see, though, if it's ready. You know, if he is going to come out here and really impress us. Just even looking at him there, I'm just going to take a moment. He's grown up quite a bit from when I first saw him play. So it's exciting to see 𝐒𝐿𝐿 in this position, but I don't think right, there's a lot of pressure on him. There is, and I think that under that pressure, he didn't really live up to it at that first ever event. Again, this was a month ago. This was his first debut. His first ever official he had ever played in VALORANT was that event. So there's been plenty of time and it felt like at times he was still very much getting used to VALORANT, getting used to the utility timings. It's a very tough learn to game. It's a very tough learn to game. It's hard to learn English, but it's a tough game to get used to in this one. I hear you every single day, Mimi. You know what, though, guys? I want to learn a little bit more about T1, shall we? So let's go ahead and hear from Zeta and 𝐒𝐿𝐿 himself about T1.
안녕하세요. 저는 T1 발로란트의 제프하고요. 현재 저의 역할은 미니 플렉스입니다. 안녕하세요. 저는 T1 발로란트 팀 활동하고 있는 𝐒𝐿𝐄𝐒입니다. 제가 생각했을 때 저희 T1 발로란트 팀은 충분히 슈퍼팀이 될 포텐셜을 가지고 있다고 생각하고, 그리고 저희 선수들끼리 모두 서로 믿고 다 신뢰가 있기 때문에 아무래도 다국적으로 섞이는 것보다 이제 저희가 한국인 로스터이기 때문에 커뮤니케이션 하는 데 더 편한 부분도 있고, 먼치킨 선수는 저희 팀에서 IGL을 상당히 똑똑하고 이제 게임도 좋은 선수고 경험도 있고, 그리고 카르페 선수는 전향한 지 얼마 안 됐는데 또 게임에서 상당한 경험을 가지고 있는 선수고, 메커니즘도 엄청 좋은 선수여서 앞으로 사야 플레이어들이 저랑 북미에서 같이 오래 활동했던 분이고 상당히 경험을 가지고 있는 선수고, 그리고 벤 선수는 저희 팀의 막내인데 저 같은 경우는 트롤링을 좀 담당하고 있는데 네, 그게 제 강력한 무기인 것 같습니다. 현재 저희 팀은 아직 공식적으로 대회를 한 번밖에 안 했지만 저희 팀 스타일은 상당히 이제 플렉서블하고 이제 팀이 어떻게 게임하는 거에 따라서 적응을 하는 팀이기 때문에 일단 저희가 첫 경기를 퓨리아랑 하게 되었는데 브라질 팬들 앞에서 한다는 게 부담감은 있지만 그래도 그런 게 동기부여. 항상 T1을 응원해주시는 팬분들께 너무 감사하다는 말씀을 전하고요. 응원해주셨으면 좋겠고 저희도 좋은 모습 보여드릴 테니까. थोड़ा सा प्रैंक कर दिया यार आपके फैंस के साथ। काफी शॉक में चला गया बेचारा। A lot of hope for this T1 team, and as they should, because they have put together a pretty solid squad that can perform in the Pacific region. We know the potential of these players. I've been a little bit of a doer about this off the look at the players, and there should be expectations for this squad to be good. You have Saya, you have Zeta, you have these Korean players who in North America really made a name for themselves as being fantastic individually. Again, it's another one of these teams where it's about how do they put those pieces together. Yeah, I think you hit the nail on the head earlier, honestly, going back to the initiative you talked about with 𝐒𝐿𝐄𝐒. It's about finding those util timings, knowing when and how to utilize them to get the maximum value out of them. I don't have to worry about 𝐒𝐿𝐄𝐒's aim for the most part. The guy knows how to click heads, so that's not my concern at all. It's more about have they really gotten in and gotten these set plays together? Has he really mastered this role now? Well, while 𝐒𝐿𝐄𝐒 can most definitely click on some heads, I mean, let's be honest, when you want to talk about some great aimers, you also got to talk about their opponents taking the stage across from them. It's going to be Furia, and this is a squad that oftentimes has to play second fiddle maybe here in the Brazilian region to the likes of Loud. But this Furia team, man, they can frag when they get unlocked. They really can, and that was their story throughout 2022. They were always looking solid in regional competition in Brazil, and they were always able to make it close to qualifying to international events. But for most of that time, there's only one slot for Brazil. They had to wait till Champions for playing that 𝐿𝐄𝐄𝐒 to actually get a slot to make it internationally. And they've been here twice before, 21, 22, both Champions. They've been involved, and they've stuck by their core roster. They've only made one change in the offseason, introducing NW Zera. So it's a team where I think, unlike a lot of these others, we kind of know what to expect, but we're hoping for more. Yeah, so some slightly elevated performances here from this side of Furia. They did still impress us at the Champions. I mean, pushing DRX into an overtime on their ascent map there. Of course, I'm going to mention them. It's the last time you have to hear about it. Yeah, don't worry. It. I got one day. But, I mean, yeah, they did have some really strong performances. So this is not a team that you absolutely, especially for T1 coming in with, you know, this roster. Oh, you should not sleep on this You squad at all. Don't want to be sleeping on them as their upcoming opponents. You know, you just have to show respect because that's when they're going to catch you off guard. That's when they're going to be able to beat you. Yeah, this B-roll we're watching is from Champions 2022. Their game versus Fnatic. They took Icebox against
against Fnatic, and that is क्या no small ऐसा है feat. That has always been Fnatic's और हाँ strategy. तुम लोग को ही मालूम है ना लोग छोड़ के चले जा रहे हैं Good करके game plan. The individuals were क्योंकि popping उनका off. पूरा They managed to इकोनॉमी take फक्ड that अप है map, पूरा but उधर they का didn't convert it into more. It's another one of those squads. We've seen them internationally. They've been an हाँ, क्या? upset team. We've always felt like they've been a step away from something clicking, हाँ and now we have to जाना see उधर this घूमने change जाना that तो MW's are पाकिस्तान coming घूमने in को is the thing that makes them click. Well, कराची you know what? वराची जा Actually, let's go ahead and put the spotlight though on MW. उनका भाई right? उधर Because की this उधर is की gonna be a लड़कियां lot of बहुत अच्छी pressure for दिखती him, हैं and you know, we actually did get a chance to chat with him, and a good head on his shoulders, बाहर नहीं आ सकते, knows yeah, what his exactly. expectations are coming into this Furia lineup, but also having to play out here, Seth. It's very clear MW's era is ready to take the stage, and I think he can be that missing piece for Furia. I mean, you have to just simply hope so. But if he really is ready to take that stage, get out there in front of all of those screaming fans, because the audience, it's filled back up. Just look back. Everybody went out. They got some water. They got some food, and they're piled in, ready to go. I mean, hell, even just the screams for them when they were walking off the stage. Yeah, they were leaving the stage. Yeah, and the crowd starts going absolutely crazy for them. That is a hell of a lot of pressure. Again, even though you know that they are cheering for you, that sometimes can still shake you up a little bit because there's just so much noise going on. Yeah, but talk about strong individuals. MW's era is one of them being added to this roster. He's had an interesting arc in early days. उन लोग को टेररिज्म का डर रहता है उन लोगों को किधर भी जाए इन लोग भले इन लोग वो हार्मलेस भी हो तो भी लोगों एक दो डाउट करते हैं उन पे Then he kind of has a renaissance, starts playing on the initiator role, makes it to that international event, and now heading into this team with Furia, his coaches really kind of hyped him up for being so incredibly flexible and so strong on every role. Yeah, and what is going to be, I think, the intangible of the situation here, right? As we had alluded to just now, the crowd, it's filling up. We saw what happened with MIBR. I don't want to say that उन लोग का दिमाग उधर ही चलता है भाई इधर कोई काम धंधा कर लो I think there was a lot of other things happening in that game, Mimi. But for Furia, there's always going to be that added expectation to go up on that stage and do the job. We did talk to them, GB, and when we heard from MW's era, he said that he didn't feel like it was an added pressure. He felt like, if anything, it could be a buff for this team, something that they can harness. They haven't played any offseason events thus far because they wanted more time to practice. That's been the idea behind this squad. So we'll have to see what that practice is. You can say that, yes, we're gonna vibe off of that. It's going to fuel us, but you never really know until you do get out there and you are in front of those fans. I'm sure MIBR felt the same way going in. Yeah, still fairly, a fairly unknown quantity. So we'll see if they are going to be able to roll with it and use that to drive them forward. Yeah, it's such a fascinating dynamic that we have here in Sao Paulo. But just like we do with every other team, let's actually go ahead and meet this Furia lineup and check out what they're all about. दीपांकर ने मेरे को वो सीरीज दिखा था भूल गया कौन सा सीरीज था Fala rapaziada, meu nome é Douglas, meu nick é DGzinho, eu sou duelista da Fúria. Falando dessa nova Fúria, depois da contratação da MW, eu acho que a gente vem com muita mais personalidade, mais confiante no que a gente faz, no que a gente está produzindo. Meu nome é Leonardo, eu jogo de iniciador e jogo pela Fúria. Uma qualidade que eu tenho é que, independente de qualquer situação, eu sempre acredito que dá pra ganhar de qualquer time, de qualquer pessoa que tá contra. A minha confiança ela é sempre muito alta, porque eu sou um jogador que trabalha muito no meu individual. Eu sempre tento pensar, todo mundo tá lutando por um propósito, então eu não consigo ter respeito contra nenhum deles. A experiência que eu obtive no último campeonato, no último mundial que a gente participou, foi muito importante, porque me fez amadurecer e crescer como jogador e como pessoa. Mas aquele foi o maior, então realmente consegui ter uma ideia de quão grande é o mundo e quão grande é as pessoas que jogam lá fora. Acho que a diferença do nosso time para a de MBR com certeza é o individual de cada player. Quase todas as pessoas que do cenário aqui do Brasil, até de fora, sabe que o individual do nosso time é muito forte. Mandar esse recado pra galera que acompanha a gente, que sempre manda mensagem também apoiando. A gente é muito grato por isso, a gente fica muito feliz em ler mensagens boas, ver que vocês também estão com boas expectativas no nosso time. E é isso, a gente sempre foca nas mensagens positivas e isso é muito importante pra gente. Go Fúria e vambora.
I think that final part just goes to show, and as I said before, just these players have great heads on their shoulders, but also the individual skill cannot be discounted, Mimi. This team knows how to frag. These guys as individuals are disgusting, and they've had a lot of time. So उसने वीडियो बनाया था वो नहीं है for second. They're going to have to be on their A game. He's a different person, but kind of look alike है वो, उसके जैसा ही दिखता है. 100% the underdogs coming into this, despite the firepower that they do have, the history of these players in just playing FPS generally. Furia should be able to take this one. I think with T1, we can only hope that they have been able to grind during this off-season after the tournament, and then show us something a lot better now here today. Yeah, the question is, right, have they managed to put in the work for T1? Has Furia been prepped enough so that they can take to the stage with confidence? But folks, we are ready to get our final match of the day underway. So why don't we go ahead and welcome to the stage T1 and Furia. उसका नाम ही अलग, फोर्सेकन का नाम है निखिल और इसका नाम ही गणेश है ना भाई, पर सेम दिखते हैं थोड़े, इसके शक्लें थोड़ी सेम ही है, तभी तो लोग भी उस पर शक कर रहे थे कि भाई यही तो नहीं. हाँ एंट्री वीडियो देखने में मजा आया. एसके का एंट्री मस्त था, रोसी का एंट्री तो क्या मस्त. वो भी है पर ठीक है. बाय मांग ले तो एसके टेलीकॉम को तो लिख रहा है साले भाई. नोट है गोल्ड. जानते भाव रोज मेरे को आके बोलते भाई सैगी भाई तुम यार अपना टाइटल अच्छा लिखो, अपना ये सुधार लो, मेरे को अपना फोटो भेजो, मैं तुमको ये थंबनेल बना के देता हूँ. मैं फोटो ही नहीं खींचता अपना खुद का. शादी वाला फोटो डालूंगा सीधा थंबनेल में. और ये BTS. It's the hometown heroes versus the plucky underdogs. What happens in this game is anyone's guess, but one thing is for certain, hometown it is heroes going to be freaking awesome as both teams huddle up and get ready to go. Mimi, you can already see the players on Furia. They are stone-faced, eyes on the prize, and that gives me a lot of hope. It does give me a lot of hope, and it should. Furia are the clear favorites heading into this one. They've made it to international events before. They have performed well. नहीं पीते रहे, ऐसे ही रखी रहती हूँ. कोई मैं रहता था तो 2-3 तो खाली कर देता खेलते खेलते. ला भाई आंदो करके. हाँ उन लोग कोच लोग भी, पर इनको भी देना चाहिए ना उन लोगों को. इतनी सारी ऐसे वो रखते. There's big questions on whether that'll work out. But if there is a player that can do it. मैं अगर नहीं थोड़ा खेलूंगा, अगर हार गए तो ऐसे करके रेड बुल पूरे कीबोर्ड, अरे कीबोर्ड और माउस तो अपना होता है यार, ऐसे नहीं करता. CPU पे डालो, CPU पे. This is such a fascinating death segment for us because we've seen him in other games, so we know what he's capable of, Mimi, but I do not blame you for being skeptical of this. I'm skeptical because he did not look particularly good in that all-season tournament, and because Fury's not going to give a damn about your खेलना छोड़ रहा हूँ. अरे खेलना मतलब छोड़ नहीं सकते, थोड़ा आराम ब्रेक ले लो. मॉर्निंग टाइम में खेलो, लाइक एक टाइम फिक्स कर लो जब तुमको ट्राई हार्ड करना है, समझ रहे हो. मैं खुद रोज असेंडेंट पहुंचता हूँ भाई. मैं तब क्या असेंडेंट होके वापस डायमंड होके, पर इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम. वो समझ जाएगा ना तो तेरा रैंक अप इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं. मैं भी होता हूँ खुद, रोज गाली देता हूँ बंदों को. हाँ कम गेम खेला कर, जैसे स्पैम करेगा ना कंप्यूटर को इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा. और ट्राई टू जो खुद स्पैम करता है, पर ये बात है, लेजिट है, फैक्ट है. लाइक 2-3 गेम खेल पर उसमें अपना 200-500% दे. हर एंगल चेक कर, पूरा वो चेक कर.
T1 will go for the attack there to start things off. I mean, unsurprising, we were talking about it. Able to take down Fnatic on Icebox, just back at Champions. Split is going to be banned away, but obviously we've been seeing a lot of different looks on Icebox. So curious to see what Furia have prepared today. Izios वही है ना, Izios क्या करता है मालूम Izios? ऐसे फ्रस्ट्रेट होता है, अरे खेलता बहुत बढ़िया है मालूम, पर वो फ्रस्ट्रेट होता है, सबको गाली देगा, सबको चारों 9 के 9 बंदों को गाली देगा, पूरे एक बंदे को नहीं छोड़ेगा। हाँ, फिर टीम थ्रो कर देती है, ये होता है उसके साथ। और समटाइम्स इट्स फाइन टू प्ले अग्रेसिव, पर वो बहुत अग्रेसिव खेलता है, जाके आगे जाके मार देता है 3-4 बंदे। ना हाँ, टीम एमवीपी मैच एमवीपी बनता है, पर ही सपोज टू गो विद द टीम। वो कभी-कभी लर्क करता है, कभी उधर जाता है, अपने हिसाब से जाता है, और वो भी सही है, पर उसको बताना चाहिए कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर से लर्क कर रहा हूँ, उधर जाके 4 बंदे मारेगा, पर उनके बंदे को क्या जेट ले रहा है, एंट्री नहीं कर रहा, वो लॉबी वही, ये लॉबी वही है, डायमंड गोल्ड लॉबी, जेट ले रहा है, एंट्री नहीं कर रहा, ये बोलेगी उसको। उसको वो नहीं फर्क पड़ता भाई, मैं उसके साथ उसको बस ऐसे चिल करने के लिए खेलता हूँ, वरना उसको रैंक अप करना। वो उसको अगर रैंक अप करना रहता ना तो मेरे को बोलता था कि आजा, बस ऐसे खेलता है, मेरे को मालूम ना भाई। It's gonna be awesome. The crowd is hot. Everyone's ready for this one, so let's go ahead and send it over to your casters for T1 versus Furia. It's going to be Bola and Dr. Dub Respect. हम लोग तू भी तो खेला है ना उसके साथ, हम लोग साथ में खेलते हैं, हम लोग कितना लड़ते हैं और जो लड़ते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर वो दूसरे दिन वापस साथ में भी खेलते हैं। अरे तो जब अरे और मैं क्या, हम लोग कैसे लड़ते, मैं और वो कैसे बोलते मालूम तो है तेरे को। मैं जब मेरा क्या रैंक था, मैं जब ब्रॉन्ज सिल्वर वगैरह रहता था ना, तब मैं और जो साथ में खेलते थे, पर हम लोग साथ में डायमंड वगैरह पहुंचे थे, जब वो भी डायमंड था, तब वो मेरे को कैरी करता था। मेरा भी यही सीन, अगर मैं 3-4 गेम दिन के 5 गेम कर दूं, ढंग से खेलूं, आराम से ये मॉडल वगैरह पहुंच सकता हूं, पर मैं बकचोदी बहुत करता, छोड़ देता हूं, मैं मिनी मैप तक नहीं देखता, ऐसे खेलते रहता हूं अगर बंदे गंदे मिले तो। These guys are really freaking good individually. This roster should work. Right, but there's a lot of tempered expectations with the squad for whatever reason. I mean, first and foremost, right? It's a roster full of Jets. Yeah. In prior generations, whatever team man is the import from North America, and now he's playing Killjoy. Let's see how this goes right now, right off the bat. A lot of A-main presence for Furia. हाँ तो वही तो वो सबसे बेस्ट आइडिया है कॉल आउट सुनना, प्लस अगर कम गेम खेलो ना तो एनिमी को रीड करना, इन लोग कैसे रीड करते, इधर रोटेशन जा रहा है, ये कर रहे, वो सीख लेने का। और तेरे को साउंड की तो इजी मिल जाती कि इधर बंदे वापस जा रहा है तो उधर उसके पीछे शिफ्ट होकर करके जाके मार देने का, इजीएस्ट फक। तोड़ दिया बेचारा considerable amount of damage. भाई मैं तो टूट गया हो गया उसका। enough for Saya to have some space to really do some damage here. Oh, but he's not expecting this peek out from MWZera. Nah, he did. First shot goes. Haga वो शेरिफ भाई, Saya player भाई। Opening kill in this series goes to Furia. And they still have a lot of control, both A-main and B-long in their hands. But T1 has the right read. They're stacking over towards A with 2, maybe 3 players. हाँ, ban वाले हार रहे ना वही। And I'm wondering if 𝐒𝐄𝐂 is going to do something over towards long. Yes, he is. Just pulled out a smoke from Munchkin right now. And the timing here is everything, right? If you are going to draw rotations, that's the way to do it, but not the case. For America, they stay disciplined on A, and that's T1 exactly what they're setting up. Ban gets one with the turret. Those mollies are melting. हाँ. And they're still trying to get through. Finally, the other player from Furia is joining. Only 20 seconds to get this spike down, though. हाँ, अरे नहीं तो उन लोग इन्फो पे खेलता ना, मिड पे जाके इन्फो लिया, उधर बंदा इधर बंदा, फिर एक जगह साथ में घुस जाएंगे। HP left as MWZera does manage to get the spike down. Oh, he doesn't! The peek there from Carpe was gorgeous. Zeta does it as well. 5 seconds left on the round. Bodies fall all over the place as T1 get the pistol. Bro, कैसा राउंड बदला देखा क्या? Chaotic round where Furia seemed to have a lot of control, but T1 makes the right read. और वो तो छोड़ के आ गया था ना, फिर वो फाइट नहीं लिया वो. Off the little pressure that 𝐒𝐄𝐂 was making.
towards B तो वही ना वो प्लांटर को उसको साउंड आ गया इधर प्लांटर है. It was really tough to deal with if that smoke's not perfect. And remember, it was Carpe who took that huge chunk of damage at the अरे very उसको लगा beginning उधर of the कोई round. नहीं है Stayed alive और long स्मोक enough डॉग to से save the स्मोक से round, पुश really. एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन लोग. And Bro, the composition switch that Mimi was alluding to as well. Very curious to see if T1's going to continue the same sort of thing that we just saw in that pistol round, because that was a big part of their strategy. But it was with Neon instead, so you have a lot more stun capability and control capability than what you have right now for Saya with the Marshall. It's a good shot. तुरंत हटा दिया उससे क्या मैं देख ही रहा था वही क्या लिखा है Easy when there's no armor on the other side. You know, there was so much discussion around Saya individually. Specifically, if you think about his time previously in his Valorant. अरे कल ये शेरिफ से अपने वाले को सामने कैसे जीत रहे थे उन लोग. शेरिफ से ताड़ तोड़ टपलियां फोड़ रहे थे वाइटैलिटी वाले. And still continue to thrive. And the nice thing about this meta is Saya doesn't have to worry about all that anymore, right? He can play the jet, he can play it comfortably, and I know it's pretty early on, but historically we've seen him look so much better on this jet roll. And it's a cleanup here from T1. He's peeking right behind him too. Everything looks good. They'll even get a smoke down. No, actually. It's a big pick from DJZin. They don't really have anything else to follow up with this though. And they still have so much art control T1 does. That dash gets him across though, and that's a big frag. It's a massive frag as Ban gets another. Saya with another shot straight through DJZin, and you know, again, we think about the circumstances of the round. Neon Lotus पे चलता है अच्छा भाई. मेरे से नहीं होता है बाकी मैप में. By and large, all is well. बाकी हाँ लोटस में ना नियॉन से मैं अकेले कर लूंगा मतलब बिना फ्लैश के इसके, पर बाकी मैप में ना फ्लैश वगैरह चाहिए रहता. So much history over in Korea in League of Legends. हाँ. With a little NA left there again. Zeta was there. Zeta played for Cloud9. Saya as well. अरे तो देख एंट्रेंस काफी छोटे है लोटस में. दो बी के ए का भी एकदम पहला ही दरवाजा उधर ही होल्ड कर लिया खत्म. That was a whole lot of days on screen. I don't remember exactly. Over 1,000 is ridiculous. It's absolutely outrageous when you consider how long the game has been out, even, and you know things of that nature. There is a deep of T1 in the books of Valorant and what we've done अरे so पर far. उसमें भी वही है, थ्री साइडेड मैप रहता ना, एक साइड अग्रेस करके ले लेना चाहिए हर बार, जैसे इन लोग करते हैं. हायर लॉबी के प्लेयर क्या लगते हैं तेरे को? इमॉर्टल उनका एम बहुत अच्छा है. उनका एम भी इन लोग के जैसे ही रहता है, उनका गेम सेंस एक नंबर होता है, प्लस उनका टीम वर्क वगैरह, पोजीशनिंग, टीम वर्क. हाँ बाकी एम उनका हाँ लाइक उनको डायमंड बंदे भी मार सकते हैं, उनको ये गोल्ड प्लैट बंदे भी उनको मार सकते हैं. Yes, they've had champions appearances both years, and I think in Champions 2022 they actually looked like they definitely had room to not only do some damage there. They had that series against DRX that I think everybody remembers, that comeback by DRX. But they had players who were. इजियोस को ही देख ले, इजियोस हर राउंड बाय करता है. जो आएगा जो उसको देखता है वो क्या इतने रुपए में क्या मिलता है वो ले लेता है. उसको कुछ नहीं है. बोल रहे मैं झाटू लॉबी में सब में इकोनॉमी नहीं मेंटेन करता है, सीधा बाय करके मारने चले जाता हूं. But I'm going to say it has to start now. It has to start with this one series, because I think people want to see a competitive Furia. हाँ तो भी हाँ. अरे तो सिंपल ये दोपहर का मैं आज का ही मैच खेल रहा था. डायमंड लॉबी में डरे हुए बंदे खेलते हैं. ये डायमंड जो रिसेंटली असेंडेंट पहुंचते हैं तो उन लोग को वो रैंक रखना रहता है कि असेंडेंट पे रहूंगा मैं, तो उन लोग एकदम वो पूछ के पीछे से खेलते रहते हैं, बहुत पैसिव खेलते हैं. तो उनके पास कोई साइड का इन्फो ही नहीं रहता, तो उनके इन्फो अपने पे इन्फो मेरे पे भी इन्फो नहीं रहता, तो मैं किधर से बनते एक्सपेक्ट करूं. इधर या तो मैं पूछ करके मार दूं या मर जाऊं, ये फिर मेरे पास चॉइस रहती है. ओमन देखा क्या? ओमन there's so much that can counter her. You got grab wells if you want to hit the one fast. On attack side, there's so much that can stifle that aggression that you want to play. Oman का वो तीन था ना, KO जैसा दिख रहा था. It slows you down significantly. ऐसे उसने हाथ ऐसे KO जैसे किया, पर मेरे को वहाँ ओमन जैसी लगी. Last 2 weeks, we've kind of had a difference in how the Alpha bracket approached the meta to how the Omega bracket approached the meta. Yeah, 1,000%. Tag pause क्या हुआ? So it's not like everything is set in stone. It's not like just because we didn't see a lot of Neon last week on Pearl, that we shouldn't continue to see Neon. And that's what is so interesting about this game. I'll always have these compositional clashes. Here we go in A main, speaking of clashes. This is what I was talking about. Sai was getting a lot of value with this on Neon,
But I think right now, मुंबई वाली दिखती है भाई वैलो over and over, and it got him into trouble when he actually walked down mid that one round. अपने इधर वैलो के टूर्नामेंट देखने लायक नहीं रहते पर मैं मेरे को तो जरा भी नहीं everybody to come over from Furia though and try to hit this B side. गोल्ड got the neon all out. गोल्ड डायमंड गेम प्ले Remember, there is no sight for it to play anti-neon, so he's just easily able to get in the back of sight. मेरे को खिला ले तो मैं अपने इधर तो डोमिनेट तो कर दूं इनको मारो Spike has made its way pretty far up though. Look at that. They're अरे पर उसके लिए backside. टीम चाहिए रहता प्लस ये करेक्शन चाहिए रहते हम लोग ऑलरेडी सब डिसाइडेड ही रहता उनका ये टीम होगी massive kills there. How much more can they find? Carpe's the only one here and all he's got is a ghost. He's going to fall as well. Fury on the board and the crowd, they like what they see. Yeah, great anti-bonus. मेरे को कुछ कनेक्शन नहीं बनाना मेरे को इमोर्टल पहुंचना और मेरे को असेंडेड अरे वो पहुंचना असेंडेड के ऊपर जाना है and the strengths of the neon. That conversation that we were just having. हाँ मुंबई में बहुत है It was a bonus though, so T1 still has a healthy buy in this next round. We're on even footing in terms of the economy, but Mazin is the guy with the Sky ult. He's got the Seekers. हाँ वो तो वही ना We'll see how they choose to approach this. You see the flash towards A main to continue to fight for some of that space, but again, a nice slow round. भाई रिसेंटली क्या हुआ ये मेरा अच्छा आईडी ना कभी उधर लैन में जाके लॉगिन नहीं करने का उधर इधर क्योंकि उधर हार्डवेयर बैन होता है ना तो अपना आईडी भी बैन हो जाता है वो ऐसे हुआ था बंदों किसी का हाँ सीएस तो वो सब ठीक है ये वैलो का सीन है वो वैलो का हार्डवेयर बैन अगर तू उधर कैफे में खेल रहा है सपोज तेरे को हार्डवेयर बैन पड़ा उधर कुछ लगा के पेनड्राइव में कोई लेके गया तेरे से पहले वाला बंदा और तू ये वालों का आईडी तेरा लॉगिन करके खेले तेरा भी बैन हो जाएगा आईडी किसी का हुआ हाँ किसी का ऐसे हुआ था लाइक मैं किधर पढ़ा था ये चीज तो मैं कभी कैफे में जाना वालों का आईडी अगर अपना आईडी तो नहीं कि ऐसे खुद आईडी बनाने का स्मार्ट आईडी वो लेके खेल लेगा उधर तो लोग ने कैफे इसके लिए तो बनाया हुआ है Full retake call though for T1. Munchkin wisely falls back. He cannot fall, and he does. He didn't fall back enough. He's gonna fall his way into the next round. मेरे इधर आएंगे नहीं खेलने बंदे थोड़ा बाहर हाँ मतलब सिटी के साइड बना सकते हैं Note here, no real ultimates. DG Zins is close by. कितना चार्ज करते हैं उन लोग as well, but there's nothing online right now. And they're all huddled up back spawn. This is gonna be so difficult to deal with because you can just overwhelm backside. That's exactly what they do. Carpe with 3 on the round now. 𝐒𝐄𝐂𝐒, who was back safe long the entire time. Not able to keep back the aggression of T1. नॉर्मली कितना चार्ज करे वो पूछा तो रहेगा ना swing as well. Not only the aggression back through back haul, and I'm wondering how they even got out of there. 1000 पर पूरा नाइट का And then Carpe per and person. The communication there, miles better than what we saw in the offseason. Yeah. Just instantly pausing for a second and double swinging. Yeah. That's how you wrap that round up. He has to be all the way back on pillar, and he just didn't have the time, given how fast everybody fell from Furia. And take a look at that one more time. Again, the flooding backside. DG's in was the first to fall, and then from that point forward, the pieces of dominoes just continued to tumble. Fist bumps all the way around as we prepare to get into the next one. हाँ पहुँचते बहुत है पर खर्चा ही बहुत है ना एक पीसी 2-3 लाख का हाँ बिजनेस में तो लगाने तो पड़ेंगे वही अरे तो मैं वही जानने की ट्राई कर रहा हूँ कि पर दिन का इतना मिलेगा तो उसका मतलब खर्चा पानी निकल जाना चाहिए ना But again, all him clearing backside right now, and he's going to go into the smoke and get punished for it. And the Prowler cleared out Secret, but it didn't go all the way up in the dugout, so it doesn't spot Ban. Nice trade out from MW Zera. Is this all going to find anything? I think it only got one tag, and he gave up on finding 𝐒𝐿. Low players, though. Munchkin's able to convert one. Mazin is all by himself up here. No, actually, 𝐒𝐿 up close too. 3v4 ban, yeah. लोग निकाल लेंगे बस, okay. Saya with the dash proc, the flash helps him out as Mazin falls. निकाल लिए इन लोगों ने. Leo playing close by with 20 HP. I mean, how much can you really ask for in a situation like that? Munchkin gets 3 on the round as T1 gets a 4. दो तो मारे plus plant हुआ. A good retake, and Fury just a couple stages there, but they up the tempo immediately, and it's super interesting because of how you continuously had that art presence from T1 in the prior rounds.
वो तो मार, अरे तो इन लोग ने वही तो BGMI देख बैन कर दिया, ये उसी की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री बनी है, आधी कम्युनिटी बनी है मालूम। हाँ हाँ हाँ। Man, this is such a fun fan base, bro. I just love watching the different chants. जानता हो, मतलब familiar हो, exactly. Such a fun atmosphere, and I said it before, but so much different being here अरे live. एक गोली है, अरे पर अपने इधर लोग क्या करते, कोई नई स्टोरी बना गया, बच्चे ने अपने बाप को मार दिया ये गेम खेलते खेलते, ऐसा है, बस बच्चा कूद गया गेम खेलते खेलते, तो उन लोग ब्लेम गेम को करते हैं। अरे मतलब नहीं, दुनिया में लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे खेलते हैं वही गेम, तेरे बच्चे क्यों ऐसे करके मरा, मतलब समझ रहे हो? One key ult for MWZer, he's got the night. वही तो बात है भाई, वो तो अरे तो वो उनको कौन समझाए भाई? Cosmic divide, the lockdown. Exactly. That is key for B retakes. If they end up going down B-long, usually it also means that it is entirely not an option for Furia unless they take through B-link. See that flash early on to fight for mid control. Prowler immediately through B-link as well. That's where they want to go. They want to pressure, make sure Ban has to either fall back or they can take him out. And the tempo is a कौन little सा different गेम? here. राकेश दादा व्हाट्स अप, वेलकम टू From स्ट्रीम। Furia. कौन सा गेम? कोई भी गेम ब्रो, But just as एनी much as इन we जनरल expect to गेम, see, ये it takes them this FPS early शूटर गेम space. प्लस It ये just मोबाइल slows right गेम, back down. ये BGMI इसी की वजह से तो बैन हो रहा था, प्लस ये वो सर्वर पे डेटा शेयर कर रहा था, वैसा भी कुछ आया था, Trying to find an opening. I've वो होना liked था the वो, defaults हाँ for यार, Furia so far. that's fair, but like वायलेंस के में उसमें नहीं डालना चाहिए उसको, Instances like in the last round you saw Munchkin had to fall back. वही वायलेंस भाई, वायलेंस, But when it comes down to the executes, outside of the one round they won, वायलेंस की वजह से भाई गोलियां चलाते हैं भाई, वायलेंस प्रमोट करते हैं लोग। That dart did not scan 𝐒𝐄𝐂. He's hidden behind a box. Saya, misinformation from the dart. हाँ क्या? The Nightfall used the knife to try to तो ये trade भी बैन हो something back, जाएगा। but it is going to delay for just a Mumbai moment. server On top of gets that, deleted. That need does such a good job of denying the entry point out onto the site. All they have to do is wait it out though. They invest. वैलो बैन करेगा तो मैं बाहर चले जाएगा भाई, फिर मैं चले जाएगा कनाडा। All the Fury players ahead of the wall immediately. You think you're going to be able to isolate fights, but you're not. Yep. Huge round from Furia. And Ban, who was on a flank, it just took a bit too long. He's shown up at the site now, but the round's already done and dusted. You have so much more difficulty finding value out of the KJ ults when you have to hold on to the site. And that's what T1 really wanted to do. I like the idea for Munchkin, but you don't have the information to stick in the back of sight right there, not knowing exactly how Fury is going to react and not knowing exactly how the hit is coming either. I think. And this dart misinformation obviously also loses them so much space in A main. अरे सब गिने चुने ही है और बाकी तो कचरा है YouTube पे, देख लेना खुद ही खोल के अपने इंडिया का। That's a thorn that could split them up from that wall. Absolutely. And the wall's designed as well to dissuade them from getting towards that plant, right? There's no plant space available from it. At least that's good. बाहर जितना वैसा इंटरनेट होना चाहिए, बाहर कैसे लोग ऐसे इंटरनेट से पैसा कमा लेते, सब पीसी पे सुबह उठ के बैठ के खत्म कर देते काम। You have to be careful here if you're Furia. I like that they came through, but this is going to be an option here that T1 will call in the future. नहीं पर अभी भाई अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, मतलब रिसेंट जो पैदा हो रहे हैं, उनके माँ बाप लाइक मेरी एज के या मेरे से थोड़े से बड़े, उन लोग अवेयर है ये चीज से, तो उन लोग अभी के बच्चे सब फोन पे और इंटरनेट पे बैठे रहते ज्यादातर, देखना यूट्यूब स्ट्रीम वगैरह देखते हैं उन लोग। They drop their own Cosmic Divide, and that's going to section off everyone from the side of T1. That's a good execute right there. Again, twice this B-long execute's going very well. The Trailblazer as well. तो आ रहा है धीरे-धीरे वही जनरेशन गैप तो है। Sure you're safe here. Now, I also want to look. Oh, DJZin getting aggro. He's so aggressive, and really, that's what you want out of your Neon player. Remember, this ult from Ban could be key to push them back off the site. But they have two players on the flank right now. That could be problematic. But this 𝐒𝐄𝐒 ult so far ahead, they have to speed up, and there's got alarm bot too. The alarm bot triggered. Ban has to turn back, but DG's in from backside. Oh bhai! He's got the ace in front of him, not able to deliver. Zader trades it back. तीन तोड़ दिया भाई. Just ridiculous. Under pressure from the lockdown too. No way he's getting the ace, but he secured the round.
Such a good moment from DJZ, not only to aggro immediately, Damn. but then Come to back stick and find the timing to fight. And you have to be holding that if you're T1, because DJZ's in the back of sight. If they don't actually start swinging out of spawn, then the problem is going to be he could just break that lockdown. Right. It was so far advanced. अब लैग नहीं हो रहा है, पहले गेम में कितना वो हुआ. Take a look at it one more time. अरे 6 लोग कौन देख रहे हैं भाई? हाई लोग करो. Understanding where his space limitations are pushing out, but this play right here. बाकी के 5 कौन है? I mean, बाकी के just 4 secure the round. I really wonder as well if DJZ's calling for that B-Link to trigger the alarm bot. A lot of times the flankers are waiting for the KJ to die in that case so they can go undetected. But there, you want him to get triggered. You want him to start rotating and looking back towards it. पहले एक जगह पैर फैलाने चाहिए ना. Beautiful execution regardless. और वो अलाउड नहीं है, YouTube की पॉलिसी में नहीं है. अगर if I stream YouTube पे तो YouTube पे मोनेटाइजेशन के बाद खाली YouTube ही करो. मतलब अगर मैं अलग कर सकता हूँ after one stream on YouTube, like मैं अलग से उस पे स्ट्रीम करता. तभी तो इन लोग नहीं करते साथ में. My gosh, I thought he hit it. Oh, for sure. That's just ridiculous. सुपर जेट किससे आ रहा है भाई? But low economy makes this even more. Carpe's tucked in an off angle here, but they're also taking. अरे तो अभी तो 4 जगह पे करके क्या करूँगा मैं? Like at a time नहीं कर सकता मैं. Nice shot up from Carpe, yeah. मेरा वो चले जाता है, मतलब क्या बोलते हैं? मोनेटाइजेशन कैंसिल कर सकते हैं YouTube वाले उसकी वजह से. Oh, you got to be careful. Especially with the A main present still. Furia right now taking a massive risk. They're just so far up. And the thing is, there's a lot of misinformation here. Look at how far up Carpe is. He's essentially in attacker spawn, so they should have no idea that they're here. That's going to get their position away. Mazine spamming through, trying to stay alive as Munchkin shows up. And he falls. Oh, okay. Now Carpe left in this 1v3. Mazine 1v3 plus we are expecting. Weak, but this would be, देख लिया उसने. I mean, this would be फ्लैश करने के लिए रेडी. if he was able to pull this off. The shock dart, that's all it is. फ्लैश करके कितना वाइड निकला वो बे. डर ही नहीं उसको. 4 भाई रिकवरी कर लिया. 0-4 से 4-2 कर लिया. 4-4 कर लिया लोगों ने. I mean. Simply put, I think Carpe goes a little too aggro here up in the spawn right now where we're looking right now. And doesn't give enough time for his teammates on A main or in A. The ones who are anchoring down पे काफी तगड़ा फाइट करते हैं लोग. To do much at all. These two right now, Carpe is way too far away to actually even find anything to trade those guys. Mamian is winning as well. Telling the team what's working, what's not. Fast A main, and I think it's the right call. I think T1 was going to start leading towards taking B long control, given what I said earlier about that setup. And they did. I mean, look at him. Look at how far up Sai is right now. And it's funny because it kind of falls in your lap. बहुत अच्छा pose है इसका. Happy to try to fight for A main. Okay, getting one. Oh, Saya. Okay, oh, tagged one. Deal some damage. Why would he peek, bro? But he manages to get away for now. Oh. Heal ले लेगा वो. So pesky here. Okay, got one. Oh my goodness. Heal हो रहा. You gotta remember. अगर केज करेगा ना तो वो वापस क्रॉस करेगा. To hold this. You don't expect him to stay here as long as he is to fight. नहीं अगर वो केज का वेट कर केज होते ही वो वापस से वो पोजीशन पकड़ता था तो ले सकता था. तो 1-2 ले सकता था. Nothing special. They know it's just one. Let's take this duel against Saya. वो डैश किया ना पीछे. The confidence is clear for Furia. ये स्काई के फ्लैश यूज करते हैं, अल्ट यूज करते हैं तो मालूम तो बात अलग है. We talk about it so many times, but confidence really is a cheat code when it comes to Valorant. 30 seconds left. The ult invested. Push forward, but 𝐒𝐿 gets 2. The flash in his face turns it, stays alive, buys some time. 𝐒𝐿𝐄𝐒 in a great spot for a flank too, but he can't over delay on this. He's got to hit the timing just right. हाँ भाई अंधे होके मरते ना बहुत बुरा लगता है भाई. उसके सामने वालों का एकदम गंदा होता है. हम लोग फ्लैश छोड़ के मार नहीं पाते उनको. बहुत बुरा लगता है. एक अगर रेना के फ्लैश में ऑलवेज पिक करो. थोड़ी देर के लिए दिखता वो रेना जल्दी स्विंग करेगा ना तो हम मार सकते हैं. बाकी इन लोग के फ्लैश में तो भाई अंधे होते पूरे. तोड़ देते भाई. हाँ पीछे का बंदा तोड़ देता है, आगे का बंदा मार देता है. Like you can go. And then for Sai as well to be fighting straight up too. He was trying to get his dash online and save his life. And remember, it was all only DJZ for the most part. Or sorry, 𝐒𝐿𝐄𝐒 for the most part fighting that. He thought he was Immortal तक जा सकते हैं रीना लेके भाई. Hey guys,
come fight with 3. This freaking fight took so long. There was Ascendant में तो अरे तोड़ते नहीं ना दूसरे बंदों का हेल्प नहीं रहता ये लॉबी का यही तो सीन है डायमंड लॉबी का things that it's really difficult to deal with if you're Munchkin, if you're the IGL from T1. हाँ तो वही तो उन लोग ये रिसेंटली Ascendant पहुंचे तो उन लोग को डर रहता है रैंक खोने का उसकी वजह से उन लोग पुश नहीं करते तो उनकी वजह से दूसरा का रैंक भी रैंक होता है उसका भी होता है उनका मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड एफ पे जा रहा हूँ Still plenty of time left in this half. Time to adjust and right the ship. This buyout from T1's not going to be pretty, though. It is worth noting here, they have the vast majority of their utility. Meanwhile, full armor, full rifles on the side of Furia. DG's in with the ult as well. And it's a pretty considerable lean towards A. 𝐒𝐿, the only one not close by, as it's almost like he's expecting to see if Sai is going to be peeking down long again, just waiting for that aggression that they saw in the previous round. Getting up close right now. This drone's coming in, though, from Carpe. Interesting, Zeta's not up here to fight with that. Potentially can fight a pick while they're dealing with the drone, but nobody peeking with it. They just get the information. I think everybody except the one who got tagged hid from that drone as well. So recall in front of them. Talk about misinformation, if that is the case. If the drone only spotted the one that was tagged. Really no idea what's on the other side, but DG's in, now choosing to go forward, drops the wall, drops the stuns too, as they've got the Trailblazer to work its way forward. It is going to spot member in secret and perhaps one in dugout as well. No, one more time, the light buyout from T1 here. They have utility, but they don't really have the guns to work with it, and they're just overwhelmed right now. It's just Sai who remains, and he's so far off the site. He was waiting B the entire time. That was such a cool play there. As Sai is going to try to do something here. Fury just uses the fast lane, the wall up from Neon, and the Trailblazer to try to confirm positions. And they're spamming for it and not pushing up, deciding, okay, are they stacking? They realize, okay, yes, they're stacking, but they're playing so far back that we have the time and we have the space to get up in the side and do something with it. I really like that round from Furia. And also just throwing in those stuns too, trying to get a Trailblazer tag. Whoa! Click mara usne Neon ne. The executes that I mentioned at the beginning of this half that were looking a little ending up looking very good now here for Furia. They've got a burst of life in the last few rounds. Ooh, he's fired up. Somebody's got to check on him and get that guy water. अरे तो तेरे को ये अल्फियर कितने साल का लगता है? 2-round lead here for Furia. And the approach कितना सांड जैसा मोटा दिखा नहीं अभी तेरे को वो है कितने साल का लगता है तेरे को We haven't seen a lot of very aggressive heavy hits. Like वैसे कितना बड़ा दिखता है वो like पर उसका छोटा है बहुत. Really no reason to try to adjust. The onus is fully on T1 here. Again, the follow-up with the dog here. Digizin has a big opportunity, but no! Fan's able to hold him back, but is he expecting more? उन लोग पे healer नहीं है ना? He's got the alarm out to make sure he's not being pushed in from Link. He tries to turn the flash, but no, he's overwhelmed by Mazine. 𝐒𝐿 slips in, drops Carpe. How did he get this lurk off into the site while all that was happening in art? You can see his camera was posted up. It's falling apart here for T1. Yes, it is. I mean, in a massive way. Expect them to push you up through art into sewers. Hey, Sky player That's the kill on the band who was set up to try to deny this space. Mazin. And they were working on collapsing onto the sites themselves. webcam, हाँ ना bro. 2 players on A. तेरे को आज मालूम पड़ा पहले से ऐसा है. Oh, wait a second. 2v2 immediately. They just lost a massive numbers advantage, and it's got real bad, real fast for Furia. This was a 4v2. And now it's all on 𝐒𝐿 to keep him back himself and to secure the round, but he's tough. They don't expect him there, but 𝐒𝐿's not able to land the shots. No way. ला दे पैसे दे 10 बार 12 15 कितने का आता है? Silences them, and I really think Furia thought that. Super chat कर दे अभी ले लेता हूँ अभी कल ही मंगवाता हूँ. How deep Mazin pushed into the spawn, into defender spawn. Sai was just holding. मेरे इधर. Right at that moment, right before Munchkin got the second there. Prime चाहिए ना उसके लिए. Sai switches off onto the
Phantom 2 days 2-3 दिन लगते 2 लगते 2 finds the last kill. Oh, size all around. अच्छा लोल अरे कुछ That नहीं थे should मस्ती never कर have gone that way. ये Absolutely. तो मैं लाइट ऑन करके नहीं रखा वरना अच्छा ही दिखता है Slightly देखो too ना ऐसे overconfident चमक there. चमक जाता And I'm not है even sure. Yeah, money was definitely going to be a big factor in that. ये वेबकैम भाई Got a पहला bulldog वेबकैम for है मेरा Zeta, मैं light armor for चेंज नहीं Saya. करूंगा अभी थोड़ा He's टाइम got the चलाऊंगा up, and they are going to challenge him right off the bat. No मत the लेना angle he's जो भी holding, है waiting for anyone to push मालूम through. नहीं Hasn't been लेनोवो का कुछ कोई spotted. सा तो है Sai is able to take care of one, drops a cloud burst, मालूम suggests that नहीं he's repositioned, but no, he's मेरे को ऐसे staying. इसके सेटअप के साथ Oh, दिया he था actually उसने कि spammed भाई the screens healing too. That's a बहुत mistake. बहुत अच्छा है करके He's उसने spamming the smoke. They मेरे को for sure think he's हाँ gone. चिपका Now दिया the था question is, Saya, Exactly. he's shown Oh, persistence उसने and dodge किया aggression. और dodge He किया still hasn't been detected. He's ओके still there! DG's in falls! And the Saya wall has protects. he's shown so much stubbornness this half. And that's another great example. शॉट ही लेके बैठा देखना He's got a shorty too, waiting for somebody to jump into the wall. Nah, now. they won't rotate I don't think so Beautiful stuff from T1. And actually एक works तो towards चार that बंदे side इधर that they रुके tried to run last time. 4v2 है But hey, 2v4 in the prior round. हम लोग को for मालूम नहीं है Fury, पीछे or कौन for पीछे T1. क्या है This time, let's see if और Fury उसको can आगे do के something. प्लेयर का Somebody पता है उन stopped लोगों Khalil all को by ओ himself. देखा बचाने आ गया They वो finally used some utility to move Saya. Okay. And it may be too late. हाँ MW Zero able to take one down. Neon Left is in this cute, yep. 1v3. Final Neon round of the half. अच्छा भी Yeah, he एजेंट भी drops the ult, बहुत अच्छा है I mean but that's all it is. The persistence नियन from खेल रहा है वो भी T1, क्यूट from होगा Saya pays off to Neon get him to a agent 6-6 cute half. है, Let's ऐसे look at बोल that रहा one हूँ। more time. I mean, he's able to get the first, and again, I mean, it's really well played. He drops the cloud burst, suggests that he's gone, Neon sidesteps ये the knife Pearl में fall अच्छा है too, so he Neon goes but I don't entirely play undetected, Pearl में and it's gorgeous. Let's Pearl throw में it down मेरा to them, see what they thought of योरू first का half. 2 रुपए का प्ले अच्छा है आज बोल रहा था कोई बंदा कि तेरे यूरो के 2 रुपए के प्ले में मेरे टीममेट्स फंस रहे कोई बंदा दोपहर को बोल के गया मेरे को जब मैं खेल रहा था Feels like I'm repeating history again. Just a little bit here, but मैं फिर मैं उसको बता ना भाई तू बोल रहा है कि यूरो का इतना मतलब टट्टी प्ले बोल रहा है पर वो वर्क कर रहा है तो वो टट्टी प्ले नहीं है हाँ चल रहा है ब्रो मैंने क्या किया था मैं हर राउंड क्या करता था कि पे क्लोन डालता हूँ फिर फ्लैश करके साइड टीपी मारता हूँ तो मैं टीपी नहीं हाँ तो मैं एक राउंड क्या किया क्लोन डाला टीपी डाला एक फ्लैश डाला और फिर ए पे भाग के चले गए तो उधर जमा रहे हो गए रहेंगे उसके टीम में तो बेचारा रो दिया वो बंदा हार रहे थे उन लोग तो उन लोग डम थे reasonable rounds. They're You should still stream on pushing this guy Twitch. deep, having him apply Yeah, I pressure, can. and T1 really ID really पड़ा है मेरे struggled Twitch to का shut ऐसे him ही down and set up for those retakes पर that पहले they so desperately wanted to play for. Yeah, he's been really brutal Yeah. for them on the attack to deal with, but they still were able to claw it back those last 2 rounds of the half. And we'll have to go ahead and zoom in once more on Harpe, as he has had a quite surprising start here. We weren't sure what to anticipate, but he comes out of this. Sure, it's 9-9. Twitch पे मैं एक भी बार स्ट्रीम नहीं किया पर I can timings they have been worked on, and of course पर पहले मैं YouTube पे तो थोड़ा मतलब ये बढ़ा हो रहा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े इस पे I saw from him before during the off season. I still want to see more 5-10 के एक पे हो जाएगा तब मैं जाके किधर और लोग को यार ये स्विच करूंगा to be able to wake their way back into this game. All I'm saying is, Mimi, don't diss the fish. I would never. I was unfamiliar with his game. Yeah, and now the fish is going to put you on notice. No, but jokes aside, though, Furia is looking good. T1 is looking good. 6-6 in the count right now as we get ready for that second half of play. And honestly, throw your notes up in the air because this is awesome. Let's send it back over to Doug and Paula. Thank you, Jimmy. Yeah, the notes were tossed a long time ago, right? They've been gone. And it's led to a very entertaining first half so far. Yeah, it has. It feels very reminiscent of the offseason game. हाँ वही हो रहा है पर. Yes, it has. Very swingy. Yep. They came up swinging, then it starts to slow, and then again. तो सर हमें क्या करना चाहिए? That on Pearl too. But this is completely different. This is a different Fury. Let's see how their defensive side, Khalil left by himself right now, but they're fighting through Art. He's got to try to get out of there. He's got to try and find some space. And it's actually Zeta who goes down first, but Zeta's going so far up. Khalil's ready for it. He's waiting. He chased him down. And the snap from Ban is disgusting. He's gotten 3 on the round. It's 1v2 left for Munchkin. He's going to show up so late, and they should have spotted the spike. हाँ, इधर-उधर से आ जाते कोई ना कोई. To even
give Munchkin a chance. अरे तो चलता है भाई पहले तो तेरे को जब मेरे 100-200 सब्सक्राइबर्स तेरे को लग रहा था तब 10-15 बंदे रहते थे अरे मेरे BGMI का बहुत क्राउड था पर मैं गेम चेंज कर लिया ना जब बैन हो गया तो बहुत क्राउड था तब 15-20 वॉचिंग रहती थी तब जबकि मेरे सब्सक्राइबर भी 1000 नहीं हुए थे तब And even, I mean, you can't introduce a ton of misdirection when you don't have the spike and they know where it is. हाँ पर अभी क्या करूँ मेरे को पसंद है ये गेम खेलना तो ये खेलूंगा ना ब्रो I don't know if it's going to be enough time to fully rotate out. Munchkin's like मेरा फोकस हाँ मेरा फोकस सब्सक्राइबर पे उतना नहीं है गेम में उस पे ज़्यादा नहीं है का इसके मैं वो भी तो नहीं करता का एडिट करके ये मोंटेज वगैरह भी क्या बना रहा हूँ ऐसे ही खेलते रहता हूँ मैं बस मेरा गेम प्ले इंप्रूव करने का ट्राई करता बस Munchkin will fall. Super solid. दांते भाव जैसा वीडियो एडिट करना कोई कर दे ओह भाई 𝐒𝐿, I mean, 3 बंदों पे क्या फ्लिक मारा इसने holy shit that is just absurd. Holy shit. Really was insane. Yeah, that was insane. Again, a 1-round lead for Furia. Decent gun investment here as well. Ooh, I'm looking at Sire right now. Actually going to take a fight down B long against MW Zera. MW Zera wants none of it. Look how patiently खेलते bro. Bro, how can I play with you? Wait. Got the sheriff. 3 kills he got. When I play unrated or when I do sub games, you can play, but I'll do it like once in a while. And you can feel the doubt and the misdirection enter the minds of the players. Week में करता रहता तो बोल देता था ना. सारा दिन तो कॉम्पी खेलता हूँ अभी कहाँ खेलूंगा रात को अभी हाँ सैटरडे हाँ दोपहर को कर सकते हैं कल कर सकते हैं तो कल संडे भी है ना सैटरडे आज तो नहीं करूँगा स्ट्रीम में जा रहा हूँ बाहर हाँ बाहर जा रहा हूँ पूरा दिन बाहर हूँ 𝐒𝐿 saw him with that jump peek and he goes for another one. संडे को करूँगा कल मतलब कल आज रात को आके कर सकता हूँ स्ट्रीम अगर आ गया तो जल्दी तब खेल सकते हैं लिख दूंगा मैं सब गेम deep down A that might be misdirection and it might leave MW Zera on an island on the site that needs to be subscribers के साथ कैसे stuns or dropping flashes to make sure that he's cleared out. They don't know how much more is there, but either way there's utility that they're not going to have to take them back. MW Zera doesn't land a single shot. Oh my goodness. Finally takes down Seiya. हाँ वही तो 10 बंदे हुए तो कस्टम खेलने में क्या मजा आएगा भाई मजा आता है कस्टम Things are equalized for now. 5 seconds left. They've got to get the spike down and no there's just not enough time. No. हार गए. That round easily could have gone either way. Poor. Such a good hold for MW Zera. आईडी का कोई सीन नहीं आईडी तो है ही है हीलियोस का भी तो है after that knife hit him and after that हीलियोस का आईडी खोला ही नहीं मैंने you don't know which side of that backline he's playing even if that knife tags you so you have to use a little bit of नहीं और दे दांते भाव और इन लोग खेलते ना oh wow oh and Saya had full information about that shoulder नहीं दांते भाव हीलियोस के आईडी से खेलते हैं कभी कभी easily मालूम नहीं अभी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा वो नहीं मालूम मेरे को हाँ मतलब अभी तो अपनी आईडी से खेल रहा था पर वो खेलता है It's such a nice touch. I know some Twitch streamer you can play with. Trying to clear out yeah, sure I can play. The Cypher utility. Now note here, they've used 2 info gathering tools on the defensive side already. They used the flash to get over into A main, and now the Trailblazer. Those are not going to be around for the rest of the round. Daytime में होगे तो कोई खेल लूँगा क्या प्रॉब्लम मेरे को कोई सीन नहीं है. And they do have a lot of control. Remember how I was talking about Fury taking control late in the rounds? T1's done it early in B-Link. They've left Saya there with just a vandal. He could go deep on a flank really fast, unexpectedly. And that was the whole point of the investment in you. Rush. That's a gun too. Remember, this is a bonus from Furia. Oh, okay. They had no idea that they'd scaled up so far. And that's the IGL as well. Right now, got to formulate a new plan. I thought for sure he was going to go back towards A, hit the site, and give Saya an opportunity to get a bunch of kills in the rotation. देखते अब ये केजे अगर केजे मरेगा ना तो साइफर और ये निकाल लेंगे राउंड. The timing on this is so nice. Where's his gun? They are gone. I thought he would have picked it up. MW again? No, this time he's gone. And they know where 𝐒𝐿𝐄𝐒 is. बहुत ही वो पोजीशन पे खड़ा था. But he's pinched right now. He's got to understand. Bands behind him, cleans him up. Zeta gets the spike down.
रीटेक हो सकता है 3v3 है. The timing on that was very well done. Okay, Neon. Saya's up top too. Really dead. Not gonna matter because Digicin goes down anyways, and there's players in spawn, so you know it's a possibility here. Last one. 𝐒𝐿, the last one standing here in this 1v3. मालूम है उनको कहाँ पे हो. He's got a Spectre to work with as well. You've got to so meticulously take care of everything in a situation like that, and it's just way too much to ask for. Furia take the lead back, and I have to stress, I know से बात कर रहे हो क्या? हाँ. Timing. Discord का sound नहीं आ रहा क्या तुमको? Stream पे. I don't know. I have a question. Why don't देखना आ रहे नहीं आ रहा रहेगा. Stream पे कैसा लग रहा था क्या अकेला छूटा बातें कर रहे हैं? Why don't ban summon Brimstone? नहीं आ रहा? Stream पे? It's a good audible call from T1 after losing कैसे कर सकते हो? They able to shore up B-Link really easily. अरे रुक जाओ डिसेबल करके इधर से सेटिंग करना पड़ता है. अरे यार where is from Furia? 𝐒𝐄𝐒 be long. MW's there in the back of hall. इधर से चेंज करना पड़ता है ना. डिफॉल्ट से हटा के वॉइस मीटर या डिफॉल्ट से हटा के कौन सा माइक. So even though 𝐒𝐄𝐒 has to fall off side, retake here. आ रहा Which is interesting given the investment of ults here. आ रहा नहीं आ रहा अभी आएगा यार. आ गया भाई. आ गया. They know there's no अच्छा तेरी सड़ी हुई बातें किसी ने सुनी नहीं पहले. कौन सी सड़ी बात है भाई? मैंने वही कौन सी सड़ी हुई बात है? कौन सी सड़ी हुई बात है? Baseball disaster, as you just mentioned. Zeta the first one to go down. Munchkin trying to hold back the aggression from Furia and fails. They can't even get out of below, and the stuns are huge. Dude, they're just trapped. They've got nowhere to go. भाई लोग फ्लिक क्या करते हैं बे? लो सेंस में खेलते नहीं हाई सेंस में खेलते. लो में तो बहुत ऐसे हाथ ऐसे खींचना पड़ता है. निर्मल भाई को बुलाओ डिस्कॉर्ड पे भाई. निर्मल भाई आ जाइए. निर्मल भाई आओ. निर्मल भाई बोलेंगे मेरे को ये गेम फालतू लगता है ऐसे बोल के चले जाएगा. मैं नहीं देखता गेम. और नाउ वी कैन हियर. थैंक यू फॉर द इनपुट निर्मल भाई. Excuse me, Fury had full aim control. They were able to full. Hello. सच बात बोली. मेरे को गेम फालतू लगता है. Here's the moment. Look, Munchkin's actually. ऐसा क्या लगता है भाई फालतू? मेरे को मालूम है भाई बोल कार्टून कैरेक्टर रहते हैं. फालतू नहीं लगता बट शूटर है और कार्टून शूटर है तो इससे कार्टून वाला वो दूसरा शूटर कार्टून वाला देखा नहीं क्या? वो कौन सा है? ओवरवॉच. ओवरवॉच नहीं एक और पूरा एलियन वाली गन रहती है वो हाथों में. एपेक्स नहीं नहीं वो हाँ देखा है मैंने. कौन सा शूटर गेम ही है. इट्स फ्री. कोई तो गेम है यही फोर्टनाइट. FPS शूटर जैसा नहीं भाई. पॉपुलर गेम नहीं है उसका नाम ऐसा सिंपल सा ही यार. हेलो भी नहीं. अरे वो जिसमें एलियन से रहते गन भी एलियन जैसे होते हैं बंदे. अरे यार अच्छा हेलो भी नहीं. नॉट हेलो वो अभी लाइक हाँ अभी आया अभी नया गेम है 2-3 महीने लाइक हाँ. Stay alive, and he takes 2 down with him. It's on Epic पे in favor of Furia. The spike once again in a precarious spot, well out of reach of the members of T1 that remain. अरे यार रुक जाओ देख के बता दो. हाँ मुझे कोई किस गेम के बारे में बात कर रहे हो याद आ गया. अपने इसमें भी आया था वो. Work to be done, but not gonna find it. Furia, they're starting to really look good, especially on those A hits. That was a classic T1 execute. That looked so good for them. अरे उसने खेलने के लिए बोला था ये खेलो करके. कैरेक्टर कुछ तो बताओ मतलब कैरेक्टर क्या है? ये जो मेरे को जितना मालूम था वही एक्सप्लेन कर दिया. कैरेक्टर का कुछ तो नेम होगा मतलब 1-2 कैरेक्टर का नेम. खेला रहता तो बता देता ना. अच्छा पहला मतलब आया हुआ गेम है या नया गेम आया? नया ही आएगा. Not breaking the haunt or what have you, but when there's so much going on, and that's influenced by how much utility Furia is throwing, it's difficult in those situations, and Digigen's just having free reign right now. They've had a chokehold on A main for the majority of the half. मैं भी वही देख रहा हूँ. वैम्पायर वाला है क्या? The flash in the sun. उसका नाम भी अजीब सा ही है मतलब. Trailblazer pushes them back. He's not going to continue forward. Saya.
And that was the only real window they had. Battle Royale है क्या ये? Space and needed to find value through art for them to be able to unlock A, but that fails too. कोप भी नहीं है। हाँ कोप भी नहीं है। आनो कौन सा गेम है? Seems like they're gonna try once again. Nothing but sheriffs, and they're there and they're waiting. They're dead. A prime game flawless comes through for Fury. कि ये एलियन शूटर वाला गेम कौन सा है? Total overdose. हाँ ले। वही यही है। टोटल ओवरडोज नहीं और एक वो नहीं रुक जा देखने नहीं ये भी नहीं टोटल ओवरडोज भी। अरे वो ना पिंक कलर का मुंह है गन। अरे एलियन वाला गन रहता है ऐसा यार। सैंटोस नहीं टोटल ओवरडोज तो बोला था खेलने को। I mean, again, you can see it. Hello, Keshav. On your screen, the crowd fired up, and for good reason. Fury managed to get through the early struggles. अरे नहीं यार वो जिसमें समझ रहे सब अजीब गरीब गन रहते हैं बंदे भी अजीब रहते हैं ऐसा अभी नया शूटर गेम आया वो। Perhaps a Hail Mary on this map too. अरे वो रुक मुझे याद है यार रुक क्या? रुके बहुत टाइम। अरे यार मेरा दिमाग उतर रहा है ब्रो। वो ना जो बोलते रहता है वो गन बंदूक बोलता है वो। गोलियां छूटती हो। भाई मेरी जुबान पे आ रहा है तो बता ना। बता दे भाई रुक जा। हाई ऑन लाइव। हाँ हाई ऑन लाइव। बड़ा अजीब गरीब गेम है। अबे सही गेम है। वो कार्टून वाला लगता है कि नहीं नॉर्मल भाई तेरे को? वो तो उससे ज्यादा लग रहा रहेगा तेरे को। मेरे पास है वो गेम। ये गेम तो मैंने देखा भी नहीं भाई। चील मारने के लिए खेल सकते हैं बट अरे पर तेरे को नहीं पसंद आएगा ना वो। यही तो मैं ये पूछ रहा था तेरे को अगर ये वैलोरेंट कार्टून लगता है तो ये कैसा लगता है? ये पूछ रहा था। ये तो भाई ये तो गन भी इसका क्या अजीब है गरीब है। वही तो बता रहा था। वैसे तो सी ऑफ थीव्स भी कार्टून है। अरे रिक एंड मॉर्टी जो देखता है उसको पसंद आएगा। Massive awareness from Carpe to turn around and clean things up for now. The cages are still up right now for QCK. As soon as the suppress stops, Digis in as well on the flank. Seeker's coming in too. QCK has to find the timing here. If you want to push your way forward because all attention has been drawn. Oh my! Digis in swings around with the ult and finds 3. Now Ban left alone in this 1v3. Again, time not at his side. His health isn't either. Digis in gets 4. Fury on map point. अरे वो R8 का चलता है भाई क्रॉस हेयर क्या ही बैठा है बंदे। अरे स्लाइड करके नीचे से निकल जाता है वो। हाँ तो भाई वही तो है नियॉन का एजेंट बेस्ट। ऊपर से अल्ट में वो उसका RNG करो भाई फुल ऑन उंगलियों से बिजली। ये लोग है बहुत सारे एजेंट खेलते कौन ये मालूम नहीं भाई किसी को भी नहीं मालूम। हमने ऐसे ही देख रहे नींद नहीं आ रहा था तो मैं सोचा ये गेम भी देख ले। हाँ ये देख ले। अबे अमंग अस खेल लेता मेरे साथ। खेल के आ गया तेरा? क्या हुआ भाई? बंदी का फोटो भेज भाई। भाई क्यूट है भाई मेरे ना। इसको बता इसको दिखा। अच्छा रुक भेजता हूँ। तेरा क्या आइडिया? अबे इसी पे वो नहीं खेलता। प्राइवेट मैसेज कर दे। नहीं पर जो फोटो में वही है ना उसका बॉयफ्रेंड। अरे उसका बॉयफ्रेंड क्या बाहर में? अरे पर वही है ना। अरे वही है ना वो। हाँ वही है हाँ वही ना। समझते नहीं उसकी पसंद भाई उसको वैसे ही लौंडे पसंद हो। क्या पता उसने कुछ और ही देख के पसंद किया हो भाई शकल। कुछ और क्या देख लिया भाई? उससे पूछ क्या? मनी मैटर्स। नहीं रे उधर के नहीं गोरी लड़कियां भाई पैसा नहीं दिखती अपने इधर की दिखती है। अरे सब जगह भाई पैसा बोलता है भाई सब जगह बोलता तो है पर ये मिलना एडिट मारेगा इसका ना भाई। बंदी है पकड़ रहे भाई बंदे। अच्छी बंदी है भाई अच्छी बंदी है भाई। दीवान का फ्यूरिया अच्छा खेली भाई ना भाई। भाभी लाइक तो लगेगी तो भाई लगेगा भाई तो वो क्या ही मिल गया। देखा फोटो? हाँ देखा मैं। ये तो साला बिकनी वाला में भेजा है इसने।
अच्छा तेरे को और चाहिए क्या? और क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोजिंग। इससे ज्यादा क्या एक्सपोजिंग? इससे ज्यादा क्या एक्सपोजिंग होता है भाई? नहीं देखना मेरे को भाई। नहीं चाहिए तो बोले बेचता हूँ। नहीं भाई तू ही देख ले। इससे ज्यादा क्या एक्सपोजिंग होगा? बॉयफ्रेंड के बोले एक्सपोजिंग कर लिया तो तू खुद को तो एक्सपोज नहीं कर दिया ना उधर। नहीं चला भाई ऐसी बंदी एग्जिस्ट नहीं करती हूँ तो चूतिया काट रहा हूँ। हाँ भाई उसका बॉयफ्रेंड तेरे से पैसे ना मांग ले देख के। अरे ओनली फैंस तो नहीं चल रहा है भाई। हाँ तो तू ऐसे वैसे नहीं लगेगा। ऐसे थोड़े से पैसे दे दो, ये क्या काम है ऐसे करके वो मांगेगी तेरे से इंस्टाग्राम से। तेरे को लगता है तेरे को लगता है ये दे देगा? नहीं मेरे को तो कोई मेंबरशिप तो लिया ही नहीं। मेरा मेंबरशिप के पैसे ही नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि तू देगा। अरे पर बंदी का नाम आते ही वो अच्छे बंदे दे देते भाई। अच्छा भाई मैं तेरे को सिंपल दिखता हूँ क्या? दिखता है नहीं है, हो भी सकता है। हो भी सकता है भाई, क्या पता चेंज हो जाए। ऐसी बंदी मिले तो आदमी सिम क्या कुछ भी बनने को तैयार। मेरी नाल तू क्या बोलूँ मैं? हो भी सकता भाई, नेचर चेंज होते हैं बंदे के। सैगी अपने लिए है कि चले गए। निर्मल भाई अनजान है। निर्मल भाई सुन रहे क्या बोल रहे चूके लोग। हाँ निर्मल भाई को फोटो भेजो। निर्मल भाई को भेजूंगा। निर्मल भाई 1 घंटा हाई और लाइव खेलो निर्मल भाई ऑन पब्लिक डिमांड, फिर तुमको वैलोरेंट अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं है लाइक मैं गेम खेलूंगा फिर मुझे पता नहीं अंदर से खेलने का मन नहीं होता वो वैलोरेंट। CS:GO खेलने में प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अरे हाँ भाई CS को खेल सकते भाई। CS:GO खेल सकता हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं वैलो नहीं जम रहा है। खेला बहुत बार खेला, बहुत लोग भी बोले, सैगी बोला उसके पहले। अरे पर बाकी दोस्त बोल रहे थे वैलो में बहुत एबिलिटीज का झंझट है। CS में क्या है कि तुम्हारे पास स्मोक फ्लैश स्मॉली वैलो में भी वही तो है सबके पास। अरे सबके पास नहीं है, अलग अलग मतलब अब जैसे साइफर के पास है। नहीं साइफर का केज है और ओमेन का स्मोक है, क्या फर्क है दोनों में? स्मोक और केज विजिबिलिटी ब्लॉक कर रहे हैं ना, सिर्फ यूज करने का पैटर्न अलग है। CS में क्या है कि 1v4 इजीली निकल जाता है ऐसे, मतलब कि तुम सोलो कर सकते हो। इसमें के स्मोक में फर्क बताता हूं। इसमें भी कर सकते। केज के अंदर कोई घुसेगा ना तो साउंड आता है कि ऐसे घुस रहा है कोई अंदर करके, कच कैसे साउंड आ रहे हैं। और दूसरा की ड्यूरेशन भी सबका अलग अलग रहता है। ड्यूरेशन अलग रहता है उनका, थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब विजन ब्लॉक ही करता है। जैसे हार्बर का स्मोक है वो अंडे वाला, उसके बुलेट पास नहीं हो सकते उसके थ्रू। तो उसको जब तक काउंटर तो कर ही सकते हैं बाकी एजेंट से लेके भी। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अरे पर वो है ना अब जैसे वन साइड कुछ नहीं होता कॉम्पिटिटिव गेम में, वन साइड कुछ नहीं होता। वन साइड कुछ नहीं होता पर वही टीम वर्क चाहिए इसमें, मतलब वो सब आपको समझना पड़ेगा और उसको काउंटर करना पड़ेगा। अरे पर CS में बहुत है ना कि एम बेस्ड है, मतलब क्या है कि एबिलिटीज का उतना सब कॉम्पिटिटिव एम बेस्ड है, कौन सा नहीं है। लाइक FPS शूटर की बात कर रहा हूँ। चलो CS चलते हैं भाई। चलो CS पुश कर। नहीं वैलोरेंट एम बेस्ड नहीं है, इसमें बहुत फ्लैश कर करके बंदे मार देते, देखा ना अभी। अरे CS में कम करके मारते। CS में भी है भाई। बिना एम के नहीं खेल सकते वैलो भी। फ्लैश कितना करोगे भाई? वही एक फ्लैश, 2 फ्लैश फिर खत्म। 2 फ्लैश पे 2 बंदे तीसरे को कैसे मारोगे? 2 फ्लैश को 2 मार दोगे, तीसरे को 2, बाकी टीम को गाली देने का वो नहीं मारते भाई, तुम लोग कुछ नहीं करते। अरे किसी का तो रिचार्जेबल फ्लैश है। FPS कॉम्पिटिटिव कोई भी गेम खेलो, तुम्हारा एम, रिएक्शन टाइम सब मैटर करेगा, सब कॉम्बिनेशन पे चलेगा। एक चीज कुछ काम की नहीं है। अरे तो CS में आओ भाई सैगी, एग्जैक्टली बोले थे। मैं पहले इधर आगे जाऊंगा फिर किधर और आऊंगा भाई, ये खेल। अरे तुम्हारा हो गया, तुम इमोर्टल पहुंच गए। चलो आ गए, मान गया पूरा लाल हो जाएगा ना वो एक्ट रैंक जब देखेगा तब मैं खेलूंगा दूसरा गेम। तुम्हारी गांड लाल हो जाएगी, तुम्हारे एक्ट रैंक लाल नहीं हो भाई। टट्टी जैसा एक्सीडेंट में बैठा हुआ है इसलिए। तू बोल कौन रहा है भाई? अरे सुनना पहले, इसलिए जो खुद सिल्वर या क्या रैंक है तेरा, जो भी रैंक है फ्लैट 3 है।
तू मेरे को बोलेगा? अरे एटलीस्ट 30 पे तो नहीं बैठा हूँ ना मैं। इसने एक्ट शुरू होने से पहले इस एक्ट में तो इमोर्टल हो के रहूंगा, दूसरे दिन देखता हूँ कि भाई ये सेगमेंट तो हो जाओ। अरे तो मेरे को थोड़ी मालूम था इतना टायर इन लोग गिराएंगे नीचे। मेरे को लगा खुलेगा तो डायमंड खुलेगा, डायमंड 2 3 खुलेगा। लाइक आई हैड टू फ्लैट से पूरा असेंडेंट करने में मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है मालूम है? दीपांकर भाई को दे दो भाई, एक दिन में तुमको दे देंगे। फ्लैट करके अरे भाई उल्टा पुश करवा के देगा ये। फ्लैट टू सिल्वर। देखो मेरे स्किल्स पे तुम नहीं जानते यार, सैगी समझ रहा है? ऐसा मारूंगा ना तेरे को। मेरे को मार देगा और मेरे को क्या है, मेरा आईडी बूस्ट करना तू। नहीं मैं तेरे को ही मार दूंगा। वही तो प्रॉब्लम है, वही तो नहीं करना है। मैं चिकेन भाई को और पैसे दे दूंगा। दे दे भाई उसको, वो पैसे से मतलब नहीं, उसको लड़कियों से मतलब है। दे तेरी बंदी दिखा उसको, गायब नहीं हो जाएगी। अरे अभी तुम लोग ऐसे क्या बोल रहे हो भाई, तुम्हारी बंदी तुम्हारी कोई, पर उससे भी तो राय पूछो। ऐसे नहीं उसने उधर से पूछा मेरे से खेलोगे, समझ रहा है? मैंने नहीं पूछा तो क्या उसका यही अर्थ हुआ ना। अरे तो इंटरेस्टेड इन में उसने खेलने के लिए बुलाया ना तेरे को, खेलने के लिए बोला थोड़ी बोला क्या अबे थोड़ी यार तुम आ जाओ यार, इधर आ जाओ यार, कनाडा कब आ रहे हो, ऐसे थोड़ी बोल रहे हो। एक मंगल गेम में तुमने क्या देख लिया, उसने तुम्हें क्या देख लिया भाई जो तुम? मैंने तो बोला तेरे को कि मैं और एक्सपोजिंग चाहिए, तो तू ही तो बोला और नहीं चाहिए। अरे मैं ये नहीं बोला, उसने तेरे में क्या देखा एक गेम में? मेरे पिकअप लाइन्स झूठ अच्छा बोलता है। क्या पिकअप लाइन मारा तूने? रुक जा भाई, उसका ये लिख लेता हूँ मैं किधर के, मेरे को काम आएगा। बता आर यू श्योर सैगी? हाँ रुक मैं तेरे को सेंड करता हूँ। नहीं बोल देख सुना दे। हम लोग को भी तो ज्ञान भरे भाई, पढ़ने थोड़ी भाई बैठूंगा मैं, खाली बताना क्या पिकअप लाइन मारा था पहले। वही तो देख I can't turn water into wine but I can turn you into mine। ये तो गूगल वाला है, व्हाट्सएप ये तो व्हाट्सएप। अरे ये तो व्हाट्सएप, ये तो यूट्यूब प्रैंकर वाले उठाए तूने। सीटी रोड में जो मारते हैं प्रैंकर, ऐसे तो वर्क करके ना, काम करके ना उसका वो वही तो वही काम करने से मतलब है ना भाई। इंडियन प्रैंकर वैसे ये देखिए बढ़िया था, ये बड़ा बढ़िया दिखा था मैंने। I was writing an article on beautiful things and I wrote about you। देखा? ठीक है समझ गया। देख मेरे साथ तो कभी ट्राई कर समझा, तो ट्राई करने से डरता है। I was looking at my go and I think about you, ऐसे लिख देता तो मैं चल जाता था ऐसा। मेरे पिकअप लाइन ऐसे रहते गंदे से, तो कभी लड़कियां बनती नहीं है। क्या करूंगा अभी? लेकिन उससे अगर उसे ग्रुप पसंद आया तो देखो, हम लोग ख्वाब में नहीं रखते, वो डायरेक्ट एकदम इंडिविजुअल मतलब अपना दिखाते कि भाई हम लोग ऐसे रहते हैं। ये नहीं कि एक दिन में हम पिकअप लाइन मारे दूसरे दिन बख्शोदी, ऐसा नहीं रहता। रियल रहते हैं। रोज नई पिकअप लाइन देनी पड़ेगी तेरे को। हाँ वो कॉपी मेंटेन हम लोग नहीं करते, बाबू सोना वाला। देखो जो है रियल में विदाउट पिकअप लाइन जब बंदी हो रही है, अंग्रेज है, बेबी करना पड़ेगा इसको। हाँ वही बेबी बोलना पड़ेगा। माय लव तुमको ज्यादा ही आगे बढ़ गए, पहले एक को तो हटाओ रास्ता से। नहीं वो भाई सैगी रुक सैगी में उसका फोटो भेजता हूँ, मैं डर गया देख के। नहीं वो कल्टिस्ट वाले का भाई जो भेज रहे हो, जो उधर भेज रहे हो इधर भी भेज दो भाई। Let's see some more among them. जनरल चैट में भेज दे, सब देख लेंगे। जनरल में डाल दो। अरे मान ना इधर ही डाल दे। जनरल में मत करो बच्चे जैस वैसे। हाँ ये भी तो नहीं मैं कर अच्छी है भाई। इधर भी भेजो बे, मेरे तरफ क्यों लेट से आता है? अच्छा तेरे को भी चाहिए?
हाँ तो भाई मैं बोला ना जो इन लोग अमंग अस खेल I mean, I don't come away रहे from that game and say, wow, this team looks कौन से सर्वर पे मिलती है भाई? First half, they looked quite strong. Being नहीं able to go 6-6. ये कनाडा में रहते वो यूके में अलग-अलग दोनों के थॉट से मिला है I think that that's okay. ये भी तो सही है रे, तूने ये भी तो ढूंढी सही कैसे इनको मतलब ऐसे अमंग अस में मिली दोनों Season were set pretty low. हाँ। So honestly, I think things too. हमको तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा खेल गया था वो राउंड तो वो बोली पर्पल लेजेंड तो मैंने बोला यस अमंग अस खेलने में कौन सा अच्छा खेल तो क्या टैलेंट चाहिए भाई झूठ बोलना चाहिए वही तो हाँ उसमें कौन सा टैलेंट है मतलब तू एक नंबर का झूठा है साला तो नहीं पता तेरे को पर्पल लेजेंड 10 साल का हूँ पर्पल लेजेंड साले अब पता चला है अमंग अस की भी टीम बना के जा रहे बाहर जाना चाहिए सब झूठ बोलेगा जाके झूठ बोलो अरे बाहर की बंदिया भाई आज तेरे पे फिदा है कल कहीं और अभी मेरी ना अभी है ना वही तो कॉन्फिडेंस है ना मेरे अंदर क्या बता वो जस्ट लाइक एज अ गेमिंग कैंपेनियन ढूंढ रही है तुम कुछ अबे और तो है तो सही अबे है तो कम से कम ये बना तो सही उधर पहुंचा तो सही मतलब उतना चल अभी जोक्स ऑन यू कनाडा कनाडा का जाओ Both these teams pick अच्छी बात तरक्की करो भाई ऐसी तरक्की अच्छी लगती है nothing else. This is a करते रहो और दो तीन फंसाओ और ये अरे दो तीन मत फंसाओ एक को फंसाओ उसके फोटो में आने की कोशिश करो ये नहीं कि साले बॉयफ्रेंड फिर सब फेसबुक पे ट्रोल करेंगे ये देखो इसको ऐसी मिली ऐसा आ जाएगा तेरा फोटो हाँ लंगूर को अंगूर मिल गई ऐसा क्या ऐसा आते फोटो अरे भाई ऐसा मत कर यार फिर हम बोलेंगे कि वो लंगूर नहीं है भाई वो अच्छा बंदा है भले ही सुपर चैट नहीं करता था ठीक है बंदा तेरे को खिलाने की बड़ी बात है ऐसे बोलूंगा उसको भाई ना भाई वही तो पेट्रोल का दाम पता है मैं तुम लोग को नहीं भाई कितने का होता है डूब जाओगे किसमें पेट्रोल में इतना कहाँ का दाम बोल रहा है तू इस कान से भाई यूपी का नहीं भाई बताओ यूपी बिहार यूपी से ज्यादा बिहार में है भाई पेट्रोल का दाम मैं तो बिहार में रहता है कहाँ रहता था पटना अबे पटना में कहाँ रहता है रे गधा बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है भाई तुम बोले कहाँ रहता है अबे तू बता ना तू बता सही अबे पटना कहाँ कंकड़बाग रहता है कहाँ डाक बंगला रहता है कहाँ रहता है हाँ अनीसाबाद अनीसाबाद का नाम सुना है फुलवारी शरीफ फुलवारी सुना है अनीसाबाद तो पहली बार सुना मैं फिर देख रहा भाई मैं देखता हूँ पटना में रह के अनीसाबाद का नाम नहीं सुन रहा देख रहा तू क्या कर रहा है इधर पटना में रहता हूँ रुक मैं देखता हूँ मेरे घर से कितने दूर है घर से कितने दूर है ये साया जेट है खाली लग रहा है मैं पटना में घर है मेरा अच्छा तेरा भी देखा है वहाँ बाईपास कौन सा बाईपास सिपारा वाला हाँ सिपारा वाला देखा है हाँ तो वहाँ पे एक घर है मेरा फिर वो देखा है कंकड़बाग हाँ कंकड़बाग भी देखा है वहाँ पे भी एक घर है मेरा सारे दो जगह नहीं मतलब वो मिला मेरे को मतलब बंटवारा होता है ना कंकड़बाग में किधर मतलब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किधर नहीं उधर नहीं वो तो राजेंद्र नगर चला गया हाँ राजेंद्र नगर मतलब वो है जी भाई साया का तो नानी का देखा शेरिफ से क्या आ गया उसने एकदम मेरे जैसा खेलता है अरे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है या लाइक तुम जल्दी पहुंच सकते हो 20 मिनट का दूर रास्ता 90 फीट से तुम जल्दी पहुंच सकते हो कंकड़बाग जा रहे हो भाई फिर उसके घर जब आ जाओ मेरे को जाना था पटना इसको बुला ले तेरे घर उधर आएगा ना तेरे को तेरे से टिप्स लेने पिकअप लाइन सिखाना मैं इको पार्क चलना है क्या होता है मेरे साथ अरे इको पार्क में भाई बहुत फ्रस्ट्रेशन इको पार्क में नहीं हम लोग वहाँ छुप जाएंगे खाली दिल्ली वाले लड़कों से मिलने जाता है ना भाई बाकी उधर आजू बाजू वाले से नहीं मिलता वो भाई दिल्ली में तो कांड
with a Sova. दिल्ली वाले लड़कों से मिलता है भाई। हाँ दिल्ली वाले लड़के पसंद है तुझे? You look at the buys right now. कुछ अलग काट हुआ T1 won the round. They have full specters or full ये Sagas, हीलियोस excuse तो me. कहाँ The रहता rest है? of Fury still has बंगा three हाँ pistols तो to work with. हीलियोस तो गांव में रहता है। I mean, बहुत बिजी हो गया वो भाई अभी तो। taking a lot of अरे जानते हो किस टाइम पे रहता है? टीसीएस की तैयारी कर रहा है वो बोल के गया अभी। TCS का? हाँ पढ़ाई कर रहा है TCS क्या होता है? हाँ अरे टाटा कंपनी वाला। हाँ टाटा कंपनी के लिए ओह अच्छा जॉब के लिए सर्टिफिकेट क्या मिलता है मतलब? उससे सैलरी बढ़ जाता है तेरा। हाँ मैं जानता हूँ उसको। हाँ इंटर्नशिप के लिए TCS में। तो उसमें मेहनत क्या करना भाई? TCS में मेहनत क्या करना? हाँ तो वो पढ़ाई कर रहा है वही बात वही सेम ही चीज तो आती है जो हम लोग पढ़ चुके पहले। उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मुझे भी यही पहली बार सुनने को आया कि TCS में पढ़ना। मैं तो ये पढ़ रहा ये पढ़ा था ना मेरे को क्या मालूम वो बोल के क्या पढ़ रहा है। TCS का पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे बोल के क्या वो है। TCS में भी नहीं वे उस वैसा नहीं होता। मतलब मोर लाइक एग्जाम उसका उनका लाइक इंटरव्यू समझ लो। अरे हाँ तो मैं वही ना ये कोडिंग का जो सीखे वही पूछते ना निर्मल भाई। इंटरव्यू के लिए कौन पढ़ता है? इसके लिए किया था क्या निर्मल भाई? Oh, the Spectre! He just picked it up. Swap to it too. नहीं अभी तक नहीं किया पर तेरे को जरूरत नहीं। नीरो भाई तो क्या करते हैं भाई? वो नहीं नहीं भाई डेवलपर ही है सॉफ्टवेयर। अरे सारे कंप्यूटर वाले बैठ हो गए। नॉर्मल लेते हैं लेकिन हम लोग को वैसे अगर जॉब एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल होगा ना तो वो वो कॉलेज टाइम का थोड़ा तो देखना पड़ेगा। अरे तो वो तो बेसिक पूछते ना ज्यादा तो तुम्हें वहाँ पे थियोरेटिकल लिखने को बोलेंगे तो प्रैक्टिकली जो करोगे वो कैसे लिखोगे डायरेक्टली? थियरी में लिखना पड़ेगा ना उसको। अबे लेकिन उसके लिए उतना तो डेडिकेशन पढ़ना पड़ेगा डेडिकेटेड। और दूसरा क्या कि वो लोग कोडिंग करवाते तो वहीं पे वो लोग नॉलेज चेक कर लेते हैं कि भाई क्या है। वो सब वो बाद में आएगा वो ये फर्स्ट स्टेप तुम्हारा ये क्लियर करके फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगे। उसके बाद प्रैक्टिकल का भी रहता है। मेरा दोस्त गया हुआ है वो सब बाद में। हाँ तो तुम क्या कर रहे हो उधर? सब्सक्राइबर के लिए भीख? क्या है भाई? सैगी जंगल में मोगली है। सैगी भाई अपना बिजनेस खोलेंगे CCD में। कैफे वैफे बनाएंगे लॉन्डिया को बुलाएंगे आओ इधर। मेड कैफ बनाएगा सैगी। जापान से लड़कियां लाएगा भाई। तो ये भी तो चूतिया है मार रहा है शेरिफ से बॉल। उसको क्या भाई शेरिफ ही जाएगा ना मरेगा तो वो सामने वाला ऑपरेटर मर जाएगा। तो अभी खत्म ही ऑफ लगा के बैठ गया उन पे फ्लैशर भी नहीं है। इधर भी मुंडी दिखाएंगे उन लोग डेड। केओ का फ्लैश क्या ही कर लेगा मतलब। और उन लोग केजे का साइड पुश कर सकते हैं Now that there's 30 seconds left to move over towards it, Digizen's still on that angle. He knows A is clear right now. Now the orb right now too. Just against the K though. यूपी में क्या कर रहा है दिबांग? मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। यूपी में रहता है वो। मैं लड़के बता रहा हूँ लड़के पटा रहा हूँ मैं। वो तो बाहर की लड़कियां इधर से भी पटा सकता है तो ऐसे यूपी में रहता है। यूपी कानपुर की लौंडिया पलता है भाई बहुत। अबे सब गाली बकती है गाली बकती वो अलग बात है भाई पर गाली भाई वो नहीं वो उनका अलग ही रहता है भाई। ये बेचारा कार पे 3 राउंड से अकेला ही जिंदा बच रहा है। अरे 2 राउंड से वही बच रहा है लास्ट में मर रहा है। गाली दे रहा है टीममेट को पहले मरना मत करो करके। नहीं वो तो ऐसा नहीं करता सही। वो मैं नहीं हूं ना इसलिए तू वहां भी तो नहीं है। वही तो भाई जिस दिन वहां गया तू मिलना नहीं मेरे को ठीक है। अरे देखो कैसा हो गया हमारा। अरे तेरे को मैनेजर चाहिए होगा एक। I didn't realize I was trying to wallbang him. Always there for you. जिसका नसीब खराब होगा वही मैनेजर बनेगा। तो मैनेजर ही गाली सुन रहा है। नहीं मैं मर्च बेचूंगा। ये मर्च अरे ये मर्च बेचेगा ये लौंडिया पटाएगा तू भी समझ। मैं ये कास्टर को ही बता लूंगा। भाई कास्टर उस पे रहेगी तभी देखता है तू। गेम से तेरे को मतलब नहीं है। ब्रॉन्ज प्लेयर को क्या फर्क पड़ता है कौन जीते कौन हारे भाई। वही ना ये तो इमोशनल कास्टर को देखने जाता है। सोच अगर कास्टर को बटा लिया इसने तो कोई बात नहीं तो क्या मैं भाई दीपाकर अब ये ब्रॉन्ज से डायरेक्ट इमोर्टल पहुंचेगा तो रहेगा। मैं रोज खेलूं मैं 5 मैन खेलूंगा इसके साथ ये आईडी से मेरे मेन आईडी से।
रोज 5 खेलने जाऊंगा बुला करके उसको। अरे उस लड़की को बोल कि वैलोरेंट खेलती है क्या? खेलती रहेगी ना, तभी तो कास्टर है। अरे नहीं उस बंदी को जिसके साथ ये अमंग अस खेलता है। नहीं वो अमंग अस खेलती है ब्रो, ये नहीं खेलती। वैलोरेंट पे अगर तू अपना गेम प्ले दिखाएगा ना तो अनफ्रेंड मारेगी। अरे पर वो भी नहीं खेलती रहेगी। नहीं वो सब नहीं खेलती रहेगी वो, क्योंकि नहीं हाँ अगर अमंग अस खेलती है ना तो वो वैलोरेंट नहीं खेलेगी कभी भी। या वैलोरेंट खेलेगी ये लोग तो वो अमंग अस नहीं खेलती। अच्छा हाँ ये एम्बाप्पे क्यों लिख रहे हैं ये लोग? इधर चैट में क्या? And for the first time in what feels like the entire series, it's actually Fury who are a कुछ bit भी लिखते हैं। behind कल देखा था क्या चैट? maybe enough to delay. कल तो देखा ही नहीं मैंने। Spike has not been planted and it just रॉसी के लिए slowly कितना कुछ finishes चल रहा था। The Rez is going to bring Mazine back up. 10 seconds left now. अच्छा वो हाँ वो तो कालिया वालिया पड़ रही थी भाई कितना क्रूशियल टाइम पे प्लांट करते हैं लोग एकदम। His clutch is going to have to be outrageous. He's got Saya right above him. Carpe. रहता ना पता कि मैं प्लांट करूंगा पीछे से बैकअप मिलेगा। Too wide and that buys enough time for Saya. अपने टीम जैसा नहीं भाई। अपने टीम में क्या है कि स्पाइक लेते ही छोड़ देते हैं ऐसे। मेरे तो वो प्लांट करने बैठेगा तो एक मुंडी उधर घुमा लेगा क्या? ठीक है कर रहा है प्लांट करने। इसको क्या कवर की जरूरत, प्लांट ही तो कर रहा है, कोई नहीं देखेगा। अरे मेरे पास तो जब भी स्पाइक आता मैंने 4 दबाया जी मैं खत्म। स्पाइक इसलिए तो फ्लैट में मेरे नाल। हाँ तो ब्रॉन्ज नहीं हूँ ना। मैं खेलता ही नहीं कॉम पे, देख मैं कितना कॉम पे खेला हूँ। सारे ऐसे ही बोलते भाई। अरे खेलेगा तो भाई अच्छा मॉडल पहुंच जाएगा रातों रात, ऐसा है 2-3 गेम में। हाँ डायरेक्ट रैंक अप में होगा मेरा। डबल ट्रिपल रैंक, इसको ट्रिपल रैंक अप मिलेगा। ट्रिपल मिलेगा तो भी किधर पहुंचेगा? ब्रॉन्ज से 3 प्लेयर के ब्रॉन्ज से प्लैट पहुंचेगा। हां प्लैट ज्यादा रैंक अप चाहिए। ए लेवल हां 6 टाइम्स चाहिए। 100 किल मारूंगा। 100 किल मारेगा स्किन तो इसका बैन हो जाएगा सीधा। Saya trying to dip once again. इस बार यार बड़े बीजीएमआई में हैकर आता था, स्पॉन एजेंट से मारता था सबको। अरे बीजीएमआई में तो बहुत गंदे हैकर आए भाई। उसमें तो ऊपर में मैं पैराशूट हां के प्लेन के अंदर ही मर गए हो तुम लोग पहले। हां वही तो बोल रहा मैं, वही स्पॉन एजेंट में जब मारा सब पैदा भी नहीं होने दिया। हां तो कितनी बात हुआ मैं पैराशूट से नीचे लैंड ही कर रहा हूं, पता नहीं कहां से पड़ रहे। और वो तो मेरे साथ काफी होता है कि वो उधर बूट कैंप के उधर उतर रहे तो पैराशूट के ऊपर में ही मार देते। हां बूट कैंप का अलग सीन है। जैगी भी हैकर था भाई, तो नुबड़ा था, किल चोर था मेरा। इसलिए तो बैन करवाया उस गेम को। अरे जैगी वो उस पे खेलता तो लगता है उसमें क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव में। Money situation not great. अरे पबजी ने जितने प्लेयर दिए ना गेमिंग इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ने किसी गेम में नहीं। उन लोग वैलोरेंट खेलते हो अच्छे नहीं लगते, उन लोग को वही खेलना चाहिए जो खेलते हैं। फ्री फायर खेलते हैं भाई वो लोग। फ्री फायर भी बैन हो गया। फ्री फायर भी बैन हो गया, पर फ्री फायर का भी कम्युनिटी बहुत बड़ा था। अरे बैन नहीं हुआ, अभी भी चलता है। नहीं हुआ अभी, नहीं फ्री फायर उसका अरे नहीं बैन हुआ था शायद, वो बीच में अनबैन हो गया रहेगा मालूम। उसका 2 वर्जन था, एक फ्री फायर और एक फ्री फायर मैक्स था, दोनों सेम गेम था, तो फ्री फायर को हटा दिया वो लोग। अच्छा अरे पर मैक्स अभी भी है, तो मैक्स में क्या फर्क है? वो फ्री फायर और ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स अच्छी है बस। और एक वही डुप्लीकेट भी निकला था फ्री फायर का, उसने फिर फ्री फायर ने ये किया क्लेम किया। पबजी डुप्लीकेट ही तो है। पबजी डुप्लीकेट है, फ्री फायर डुप्लीकेट है। फ्री फायर डुप्लीकेट होगा ना, ये तो निर्मल भाई केयर करेंगे। अरे ये पबजी पीसी बहुत पहले मुझे क्या, मैं तो नहीं खेलता, ऐसे बोल देंगे। हां मैं तो पबजी पीसी खेलता हूं भाई, काम नहीं किया। अरे पबजी पीसी पहले आया है। पबजी भाई हम खेलते थे, निर्मल भाई आईफोन 4 में खेलते थे, 4S में। 6 आईफोन 4 में नहीं 6 में, हां 6 में खेलते थे। पागल क्या, आईफोन 4 2005 में है। तो मालूम नहीं, मैं पबजी मोबाइल तब खेलता था जब इंडियन सर्वर भी नहीं थे, यूरोप खेलना पड़ता था। हां अभी भी वही हाल है। अब तो अभी भी इन लोग खेलते ना, ये पाजी और उन लोग खेलते, पबजी खेलते उन लोग वीपीएन लगा के, मालूम नहीं क्या करके। ये नहीं बीजीएमआई नहीं खेलते, अब उतना हाइप नहीं रहा।
अब नहीं, अब खत्म हो गया भाई। अभी भी दोस्तों के साथ खेलने में मजा आता है उतना, पर ऐसे नहीं मजा आता जैसे पहले आता था। अब पोनेस नहीं रहेगा बढ़िया। अरे तो पहले वाली क्लासिक पबजी नहीं रही, अब तो भाई क्या तो कारवार की स्किन आ गई और क्या क्या बहुत कुछ हो गया। हाँ वो तो जस्ट लाइक फ्री फायर हो गया फिर तो। फोर्टनाइट बोलने जा ठीक है। मैंने फोर्टनाइट बहुत खेला भाई मैंने। तेरे को वो सब आता है वैसे, वॉल वॉल बना के ऊपर चढ़ के मारते हैं? अरे हाँ सीखा था मैंने। कैसे करते हो, मतलब क्या दबाना रहता है? क्या मतलब? तेरे को ऐसे अरे वो EQC ऐसा रहता है उसमें, वैलोरेंट की तरह है। वैलोरेंट की तरह है। अरे कितने बंदे तो माउस पे ये करते हैं, माउस बाइट कर लेते हैं। वॉल का अलग रहता है और फ्लोर का अलग रहता है। हाँ वॉल रहता है, स्टेयर रहता है और रूफ रहता है। अरे वो काटा वाला भी रहता है ना। तो इन लोग इतना फास्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे मैं देखता हूँ ऐसे हाई सेंस में खेलना पड़ेगा। अरे वो इजी रहता है, मैं भी कर सकता हूँ। करना वो सिर्फ माउस घुमाते जाओ और टैप करते जाओ, बढ़ा जाएगा वो खुद से ही। स्नैप इन हो जाता है ना पूरा। लाइक एक वॉल डालोगे तो उसके साथ में फ्लोर सीधा स्नैप हो जाता है। मेरे को वही अजीब लगता है भाई, इतना फटाफट कैसे करते हैं इन लोग खेलते भाई। अरे को भी आता है वो तो। हाँ वो तोड़ेगा, वो तोड़ते बंदे तो उसके तोड़ो, पहले वो दीवार तोड़ो फिर बंदे को मारो फिर वापस वो वॉल बना देगा। बनने में कितना टाइम लगता है? 4-5 सेकंड लगते हैं फुल बनने में। 2 सेकंड में नहीं वैसा नहीं होता। जैसे कि 3 तरह का होता है। फाउंडेशन वीक होता है ना स्टार्टिंग में जब। हाँ फाउंडेशन वीक होता है, लेकिन अच्छे मटेरियल्स यूज करोगे तो वो स्ट्रांग रहता है। मतलब तो लूट करनी पड़ती है, वैसा रहता है ना। हाँ तोड़ना पड़ेगा सब। ट्री तोड़ोगे लकड़ी मिलेगी। हाँ फिर सोना रहता है और फिर रहता है स्टील आयरन रहता है। अरे वो तो घर वर भी तोड़ के वुड ले सकते हो। हाँ अभी सर 2 सेकंड में बना लेता था। अभी भाई बहुत पॉपुलर फोर्टनाइट बाहर के बच्चों में। कौन सा? नोबिल्डा है ना फोर्टनाइट। और मेरे को बहुत भाई मतलब वर्क हार्ड लगता है भाई। ऐसे वो बनाओ, ऐसे घर पर बनाओ। बहुत इजी है। इसमें नहीं होता मेरे से, वैलोरेंट में नहीं होता जैसे इतना खेलता। इसका मेन स्किल वही है, बिल्डिंग का मेन स्किल है। इससे अच्छा बंदा मारो भाई। नहीं तुम मार नहीं सकता बंदा को, ऐसा होता है उसमें। और तेरे को वॉल नहीं आता है बनाना। तो एम वाइज ना वैलो इजी है, उसमें एम होल्ड करके मार सकते हैं बंदे। जैसे CS:GO में अरे तो ये ना बैटल, अरे तो वो बैटल रॉयल है, वो बैटल रॉयल है। ये तुम्हारा FPS शूटर गेम है, तो दोनों में अंतर है ना। एग्जैक्टली, तो दूसरा FPS शूटर है उसमें भी एंगल होल्डिंग नहीं रहता उतना। CS को ज्यादा हार्ड है। रॉ एम चाहिए। ये एपेक्स भी कितना हार्ड है, एपेक्स भी हार्ड है। दीपांकर खेला है क्या? एम बॉट अरे CS की आईडी है? नहीं मैंने वैसा नहीं खेला, मतलब साइबर कैफे वैसा, मतलब समझ रहा है। कैफे वैफे में अरे एक बताते ना CS की आईडी रैंक पुश करते थे। बहुत दिन हो गया, मैं भी बहुत दिन पहले खेलता था 2016 में। ये तो मैं तो वो CS बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले। अरे वही भाई वाचिंग VCT चैटिंग। एटॉमिक हर्ट जानते हो? हाँ एटॉमिक हर्ट, हाँ गेम है। मैंने मतलब खेल रहा था मैं। देखता हूं, रुक जा। बहुत अच्छा गेम है, खेल ट्राई कर। ओ ये वाला This is the type of flash देखा that मैंने, we're seeing more and more from it. As a new player to this game, मैंने you expect even more though. नहीं ये वाला नहीं दिखा। From someone with his tenure. वो अच्छा गेम है, ट्राई करना। मेरे को ये शूटिंग वाले गेम अगर सिंगल प्लेयर है ना तो मैं खेलता ही नहीं। तो सिंगल प्लेयर गेम कैसा चाहिए, जैसे वो खेले हम लोग गॉड ऑफ वॉर, स्ट्रे। स्ट्रे वैसा एकदम चिल चाहिए। उसमें मस्ती नहीं किया मेरे को। अच्छा है भाई ये। लास्ट ऑफ अस भी खेल सकते हो भाई, ये गेम अच्छा है। PC पे आ गया लास्ट ऑफ अस। हाँ लास्ट ऑफ अस आ गया, आ गया PC पे तो कब का है? मार्च एंडिंग नहीं था ये मार्च में आएगा भाई ना। प्लेयर है क्या ये? सिंगल प्लेयर गेम है, फेब में आने वाला था, अब मार्च में। कौन सा? एटॉमिक हार्ट। हाँ तो अच्छा गेम है, अच्छा दिख रहा है। तो मैं तो वही तो बोला अच्छा गेम है। अरे वो कंप्लीट किया क्या तूने? वो ह्यूमन ये वाला कौन सा था? कौन सा गेम स्टार्ट किया था तूने? डिसऑनर्ड? नहीं प्लेग नहीं, इससे पहले
डेथ स्ट्रैंडिंग डेथ स्ट्रैंडिंग हां डेथ नहीं हां भाई अरे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा भाई। गेम है वॉरजोन ट्राई करो, ट्राई किया भाई वॉरजोन में उधर से हवा में मार देते मेरे को, तो मैं उधर से खेलना मत। अब नहीं मार सकता, वो बंद कर दिया वो लोग। बंद कर दिया होगी हवा में नहीं अरे हवा में मारना बंद कर दिया है, मतलब आप वो नहीं मार सकते हो। ऐसा कर दिया भाई। मैं तो उधर ही मेरी फट गई मैं, क्योंकि उन लोग के पास स्किन रहती है ऑलरेडी। हवा में अभी उतरा नहीं बंदा, पैराशूट भी तोड़ देता टाटा करके भाई। मैं खुद भी मारता था, एक को तो निपटा देता था उतरने से पहले। अरे अच्छा है रे, हवा में मारो बंदा मार दो। अरे कोई बंदा अगर पहली बार खेल रहा है उसको तुम हवा में मार दोगे तो उसके बाद वो जेल में जाता है, जेल में वहां पे पीट के जाता है। केओ और रोमन सबका है इसके पास, ये कर रहा है, देख रहा है। हां on the circumstances, but again, if you are just tuning in and figuring out what's going on, लोग तो कॉन्सर्ट में ऐसे कर रहे हैं यार, used in one of the rounds, and because of that, ये टैग पॉज क्यों ले रहे हैं आज? बहुत टैग पॉज ले रहे हैं लोग। to the score. One of the rounds will be taken off. फटाफट खत्म करो ना भाई, ये पर को जितवा दो। On what the exploit was or anything like that, we will keep you all informed. But for now, हैकर मिला इन लोग को लग रहा deliberation on an elimination. ऐसा तो है ना, I mean, the story is it's just incredible. The drama built into this script is just so good. हैकर तुम्हें देखना है तो सीएस में आओ भाई। CS मैं तो अरे वो CS काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का पहले का जो था क्या था 1.6 CS उसके पहले का भी था, उसमें हैकर देखो तुम CS 0 CS 0 कंडीशन 0 उसमें हैकर देखो, तुमको मालूम पड़ेगा हैकर क्या होता है। हाँ खेलने नहीं देते, इतने हैकर हो गए थे फिर वो गेम ही खत्म हो गया फिर। नहीं हैकर तो CS:GO में भी थे भाई 2016 में भाई, घूमते थे ऐसे गंदा ना कि उसके बाद तो तुम छोड़ दो। पर वैलोरेंट कैसा है कि एक दो राउंड हारे बंदे गिव अप कर देते, CS में हम लोग हैकर के एंगेज भी खेल लेते थे। अरे पर ये गिव अप नहीं करते इन लोग, इसमें बहुत लोग पिस्ड ऑफ बंदे रहते क्योंकि एक दो कॉम्पी हार के आते ना, फिर ऐसे रोतड़ू मूव करके खेलते, मूड ना कॉल देते, चुपचाप खेलते रहते ना, वो जो खेल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अरे पर थ्रोअर भी बहुत आते हैं, जरा सा भी बात बोल दो। अरे निर्मल भाई सुन, इसमें क्या रहता है, रैंक में खेलने वाले आते हैं, उनको रैंक अप करना रहता है, तभी तो उन लोग रैंक क्यों करते हैं। तो सिर्फ रैंक अप के लिए नहीं ना, लाइक गेम खेलने के लिए भी खेलो, रैंक अप हो जाएगा। गेम खेलने के लिए अनरेटेड रहता है वो, वैसा माइंडसेट रहता है ना। नहीं अरे रैंक में देखो वो चिल करके बोल देते ना, मतलब वो चिल करके बोल देते ना, हाँ भाई कोई मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, जीतेंगे हारे, वैसे भी नहीं बोलते उन लोग, रोने लगते सीधा। अरे वो लोग को सिर्फ दो बात बोलो, बच्चे लोग हैं और कुछ सिर्फ दो बात बोलो कि तुम गार्ड मरवाओ अपनी जाके, बस इतनी, बस थ्रो कर देंगे वो लोग, बोलेंगे मैं नहीं खेल रहा। ईगो रहता बहुत। मैंने ये पहला गेम देखा है ऐसा जिसमें भाई ऐसे मतलब दो राउंड हार। इसमें निर्मल भाई अगर तू बच्चों के साथ, अगर तेरी टीम में गलती से बच्चा आ गया ना, मैं म्यूट कर दूंगा, खत्म कर देगा उसको, नहीं मैं तोड़ देगा उसको, नहीं बोल, वो तब बोलता था, मैं बोलना बंद कर दिया, मैं म्यूट कर देता हूँ बस। अच्छी बात है फिर, अब मैच्योर हो। निर्मल भाई का कोई तो पुराना स्ट्रीम में उठा के देखना, ये पबजी पीसी खेल रहा है, किसी चाइनीज बंदे को ऐसे डाटा इसने, वो चाइनीज बंदा चलेगा, मतलब वो क्या होता है पूरा गिव अप ही कर दो। मैं देख के इतना हंस रहा था जब तू पबजी ऐसे स्ट्रीम कर रहा था, जब मैंने बोला था मैं देखना है मैंने करके, तब कोई तूने एक दो तेरी कम ही स्ट्रीम है ना, वो एक आधा स्ट्रीम में है वो। चाइनीज बंदे को हिंदी समझ आया हो? नहीं हिंदी में नहीं भाई, इंग्लिश में डाला भाई, इंग्लिश भाई क्या समझ में डाला भाई उनको। अरे ऐसा क्या है भाई, बिहारी भाई ऐसा तोड़ा था ना इसने, मतलब वो बंदा कुछ कर रहा था तो निर्मल भाई ने तोड़ दिया उसको, तो बेचारा बोल रहा है गन मांग, याद आया गन मांग रहा था वो। हाँ तो गन मांगने में ऐसे कौन गन देता है भाई, इतना सुना के? नहीं वो बहुत गन बार बार बके जा रहा है, मैंने तब बोल दिया था कि जो मिला उससे खेल। ऐसे कुछ तोड़ दिया था, मैं देख के हंसे जा रहा भाई, हो गया इधर बीच का भी हो गया। चल भाई सैगी में जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट एवरीवन। मैं भी जाने वाला हूँ अभी, खत्म। ये देखना नहीं देखना मेरे को, नहीं देखना अभी, हो गया मेरे को। अरे अब हो गया रे, अब खत्म करते भाई,
3 बज रहे 3 बज रहे, छोड़ो। हैं। कोई भी जीते हमारी टीम तो चली गई ना। अपने को क्या भाई? अपने को क्या ये चाइनीज भाई अब पर ये काय को इतना पॉज ले रहे ब्रो? फालतू का अरे टेक्निकल इशू होंगे इनकी, पता नहीं इनका वायरस चला गया होगा पीसी पे। हाँ ये देखो कपूर फ्रस्ट्रेशन में होंगे। ओके चलो बंद ही करते भाई, मैं बंद कर रहा हूँ। चलो भाई बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय। गुड नाइट। निरोल भाई सो रहा है क्या? निरोल क्या कर रहे ना मैं नहीं सोऊंगा। तो क्या उठा? नहीं मैं सोऊंगा 5-6 बजे आराम से। मेरे को कल उठना है 9 बजे सुबह। उठ जाऊंगा मैं 3 बजे सोऊंगा तो भी। चलो भाई बंद कर रहा हूँ स्ट्रीम। बाय बाय। ओके बाय।